Okay, today is a special session which has been planned. I want everybody to first write which batch they are from in the chat box. Okay, जो भी आपने कोर्स किया है, जो जिसका एक्स्ट्रा लेक्चर अभी हो रहा है, just write the batch you're from, and this batch का extra lecture अभी हो रहा है, just write that batch and then let me know. Good afternoon, Rupinder. Good afternoon, Shireen. Good afternoon, Anita. Good afternoon, Kavya. Diet and nutrition, no, you must be having some specific one like diet planning, DP. That must be the code. So what was the code for your batch? Okay, you are from ADN, Swati. All right. I'm fine, Anita. Thank you. Good afternoon, Meher. Good afternoon, Swati. Good afternoon, Ganga. Okay. Okay, so we have from both the batches, advanced course as well as oh, Meher. Thank you so much. So we okay, so I have from both. All right, all right. So ADN and DP, both the students are here. All right. I want to know the ये extra class हमने assessments को समझने के लिए करी है, diet plan को समझने के लिए करी है. I want to know what exactly you don't understand, what you want an explanation for. Do you want me to go through the exchange meal plan table and then we can start making the exchange distribution and the menu plan? What exactly do we need? Because I've been given very vague instruction about that plan. Okay. Can anybody explain it to me? Just write in the chat box. Okay, some people are from both. Anupama ji, I'll just come out to you. I just want to first see what is the agenda for today's class. Because query form नहीं आया है मेरे पास. ओके, मेन्यू प्लानिंग में ग्राम्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है नहीं आ रहा है. ओके, okay, that's a specific one. Okay, no problem, Yamini. You can just see what is going on. Yes, so a lot of people are here from diet planning as well as advanced course, and a few of you are from apprenticeship also. Okay, so you're having problem with exchange planning. I get it, it is tough. Okay, just a minute. Anupama ji, please let me know. What is your question? Good afternoon, ma'am. एक्चुअली मैम जैसे मैंने आपको असेसमेंट भेजा था केस स्टडीज के, वो तो आपने मींस राइट करके भेजे हैं, वहां तक तो हो गया था जो सिंपल लगे. बट जब थोड़ा हार्ड इसमें जाते हैं, जैसे वेजिटेरियन डाइट प्लान करना है, जैसे मैंने मेरे खुद का किया आफ्टर दैट केस स्टडीज के बाद में. सो मैंने निकाला, मेरा जो टारगेट था मुझे चाहिए था 1900 कैलोरीज का. तो क्योंकि मैं अभी मसल बिल्डिंग पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ. ओके, सो उस केस में मुझे वेजिटेरियन प्लानिंग में जो प्रोटीन का है रिक्वायरमेंट मेरा पूरा नहीं हो रहा है. मैंने काफी सारा पल्सेस भी ऐड किया, फिर ग्रीन वेजिटेबल्स भी ऐड किए, है ना. फिर भी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. मोरिंगा पाउडर ऐड किया है, स्पिरुलिना पाउडर ऐड किया है,
ओके, सो फिर इसके बावजूद फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या फिर हमको लास्ट ऑप्शन ये प्रोटीन सप्लीमेंट ही रहता है ना? तो ये थोड़ा मुझे करना था कंफर्म। और आप थोड़ा हमको जो मेन्यू प्लानिंग है ना, एक्सचेंज प्लानिंग के साथ में मेन्यू प्लानिंग भी हमको वो एग्जैक्ट करके आप थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी में हमको फिर दिक्कत आती है करते वक्त फाइनल प्रैक्टिकल में। ओके अनुपमा, आपका क्वेश्चन वैलिड है। बिल्कुल प्रॉब्लम आती है और कई बार हमारे हाथ बंधे होते हैं कि कोई चीज अवेलेबल नहीं होती, तो व्हाट गुड ऑप्शंस दैट वी हैव। Okay, right. now the thing is for vegetarian options, ऐसा बहुत बार होता है. See, I personally feel that 20% is very unrealistic. It is a very, very high protein intake. So athletes should go for it, yes. But on a normal scale, even if we are focusing on muscle building, we are not working out like athletes. So instead of going for that 20% protein, you can easily bring it down to between 15 to 20%. मतलब आप 15% भी दे सकते हो, 16% भी दे सकते हो, 18% भी दे सकते हो. That is absolutely fine. ठीक है. एक पहली चीज तो ये कि you don't put your mark very high. Ideally हमें 11 to 15% एक normal इंसान के लिए चाहिए. 15% is towards the higher side. Okay, then when you are towards, you want to give a little bit higher protein, keep it consistently between 15 and 18. ठीक है. एथलीट्स के लिए आप 20% तक जाइए. टीनेजर एथलीट्स होते हैं उनके लिए आप 20% तक जाइए. ठीक है. दूसरी बात, अगर वेजिटेरियन डाइट होती है तो यस, इट इज डिफिकल्ट समटाइम्स टू कंप्लीट विद द प्रोटीन. सो यू हैव टू गो फॉर गुड अमाउंट ऑफ सीरियल्स एज वेल एंड गुड अमाउंट ऑफ, क्योंकि सीरियल्स में भी आपको प्रोटीन्स मिलेंगे. ठीक है. होल ग्रेन्स में अगर आप जाएंगे तो आपका जो फाइबर इनटेक जब हाई रहेगा तो एब्जॉर्प्शन आपका जो फैट्स और एनर्जी का रहता है वो स्लो डाउन हो जाता है, बट प्रोटीन्स अदरवाइज विल नॉट बी दैट मच अफेक्टेड, सो यू विल गेट इट राइट. Then yes, many times you will have to include supplements in the diet as well as. लेकिन ये बात का आप ध्यान रखिए कि जो हम एक्सचेंज प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेशन. 10 ग्राम राजमा और 10 ग्राम मूंग की दाल अलग अलग होते हैं. राजमा विल बी मोर डेंस एंड इट विल लुक वेरी स्मॉल आफ्टर कुकिंग, बट दाल जो होगी वो पानी डालने के बाद ज्यादा फूलेगी एज कंपेयर टू योर राजमा. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल कि हम कितना दे सकते हैं. ठीक है. So include these things in your diet and always phase it with your patient. जब आप patient की बात कर रहे हैं तो आपको immediately 20% देने की जरूरत नहीं है. You will phase it. You will start with 15, then go to 17, then go to 18, and then if required, go to 20. Definitely, you are going to see a good amount of change in that. First change will happen when they remove the processed food from their diet. First change, usually it will happen when they remove the processed food from the diet. ठीक है. मैक्रोस की वैल्यूज कैलोरीज से मैच नहीं कर रही है. Yes, but the thing is that every day you're going to eat different things. So if it's in the range 100-200 कैलोरी नीचे या ऊपर होती है तो वो थ्रू आउट द वीक वो बैलेंस हो जाती है. ठीक है. Sometimes I get stuck how to divide the food groups according to the different diseases. Swati, yes, that is the challenge that you have to overcome by practice. You know, I can't teach you that in the class. That will come with experience. वो ऐसे नहीं आता. और आपको मतलब जैसे एक internship program में रहना पड़ता है to understand, especially when you're dealing with diseases. Exchange planning नहीं आई है नीतू. Okay. No, Shireen, there is no industry standards for diet chart. Okay, but you should assess the nutritional. Shrestha, I think you have. We have done the nutritional assessment, anthropometry, biochemical assessment, clinical assessment, dietary assessment. ये सारी चीजें हमने क्लास में करी हुई हैं. Okay. I think which batch are you in? ADN. Good afternoon, Mamta. How much moringa powder and nutritional yeast we should take and how to inculcate daily in our routine? स्वाति, जितनी आपकी क्लाइंट को जरूरत है उसके हिसाब से आप ये दोनों चीजें डिसाइड करेंगे.
न्यूट्रिशनल ईस्ट अगर आप 12 के लिए अपने पेशेंट को दे रहे हैं, आराम से 1 टेबल स्पून आप एक दिन में दे सकते हैं. ओके, अदरवाइज जस्ट सी, आई ऑलवेज से दैट आप लोग सीखने के लिए आए हैं, सो कीप योर माइंड ओपन. डोंट डिमांड आंसर्स कि ऐसा है तो आपने ऐसे क्यों नहीं बोला और वैसे क्यों नहीं बोला. I will not be able to cover my experience in a short time, in few minutes of interactions. Okay, a few hours of interaction, even few days of interaction, because the knowledge it gets accumulated and it changes over time. Okay, so always when you want to make informed decisions, try to read the label. जैसे न्यूट्रिशनल लीस्ट है, बिल्कुल नई चीज है, लेकिन वो डब्बे में ही आएगी आपके पास, आप कहीं से उसको ले नहीं रहे, ठीक है, आप घर पे उसको बना नहीं रहे, वो डब्बे में आएगी. उसमें देखिए कि उसकी वैल्यू क्या है. रीड द लेबल्स, रीड द इंग्रेडिएंट्स, उसकी वैल्यू क्या है. अच्छा, तो उसमें अगर 1 चम्मच में इतना मेरे को विटामिन B12 मिल रहा है, तो मुझे अपने पेशेंट को 1 चम्मच देना है, 2 चम्मच देना है, कितना देना है, ये ओनस आपके ऊपर है, ये मैं नहीं बता सकती. You know your client much better than I will ever know. Okay. Let me take a question. I have been asked a question: which detox is advisable for headaches? Which micronutrients are required for headaches? As all the reports are normal. Can anybody answer me this question? Detox advisable for headaches. Which micronutrients are required for headaches? Can anybody answer this question? कौन सा डिटॉक्स हेडेक्स के लिए एडवाइजेबल है और कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए हेडेक्स के लिए? Asra, you are the only one who's saying that I'm not audible. Please, Asra, आप अपना वॉल्यूम चेक करिए, ठीक है? ओके, सो प्रिया, आपका आंसर है, कुछ लोगों ने बोला जिंक एंड मैंगनीज, कुछ लोगों ने बोला गट डिटॉक्स, कुछ लोगों ने बोला मैग्नीशियम, कुछ लोगों ने बोला आयरन. ठीक है, सो ओके, एक ने बोला मैग्नीशियम, गार्लिक, इट मे बी बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन. ठीक है, आपके ही कलीग्स आपका आंसर दे रहे हैं प्रिया. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू मी योर क्वेश्चन इज रॉन्ग. Okay, your question is wrong because you are just looking for easy answers. अगर headaches persistent है, नहीं जा रहे हैं, उसका root cause क्या है, कब होते हैं, note it down in a diary. कब headache होते हैं, find out your triggers. Okay, look into the probable causes, जैसे कि dehydration में headaches बहुत हो सकते हैं, sudden changes in temperature से भी लोगों को headaches हो सकते हैं. Too much noise, decibel levels बहुत high रहते हैं cities में, everywhere screens are there, machines are thumping, तो कई लोगों को उससे भी headaches हो सकते हैं. BP होता है, उससे भी headaches हो सकते हैं. तो you are not looking into the probable causes. MRI BP नहीं बता सकता. आपका MRI reports normal है, that is amazing. बट अगर आपका ब्लड प्रेशर में चेंजेस हैं तो वो MRI नहीं बता सकता. डिहाइड्रेटेड हो, MRI नहीं बता सकता. Okay, so you are not looking into the possible root causes of the headaches. Okay, so it could be anything. So please, it could be that your eyesight has become weak. Okay, so there are more than one causes, so look into the causes first. Okay, of course, sinus, yes Mamta, yes, sinus se bhi ho jata hai. So the whole point is you have to understand where it is coming from, notice when it is happening, write it down, so you will you will be able to judge the pattern ki kab ho raha hai, kab nahi ho raha hai. ठीक है, I cannot give you a detox for headaches. I'm sorry, that is an invalid question. Headache in itself is a symptom, it is not the problem. Headache is always signifying that something is wrong. Now what thing is wrong is up to you to find out what thing is wrong. Okay, so if I have these kind of questions today, I will be a failure to answer them, because if you ask me, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है,
मेरे दांत में दर्द है, I cannot give you that answers. I can just tell you that you have to notice what is happening and you have to take a note of it. And if look at your diet, if it is not balanced, just try to balance it. Another thing which everybody has a very different idea of कि balanced diet fix होती है, balanced diet fix नहीं होती है. Balanced diet हर रोज balance करनी पड़ती है. Balanced diet fixed diet नहीं होती है. Imagine that you are riding a bike. If you stop, you will fall. If you are moving, then you will maintain balance and you will reach somewhere. ठीक है? तो balanced diet is a dynamic diet. You have to balance every day. कभी थोड़ा इधर, कभी थोड़ा उधर. Okay? Okay, Shireen, by anthropometry, we assess the building blocks of the diet chart like macros, but I get confused when micronutrients come. How to assess RDI? I was talking about that assessment. Shireen, see, जो micronutrients होते हैं, अगर आप macronutrients में varied diet देते हो, तो आपके micronutrients अपने आप cover हो जाते हैं until and unless there is a frank deficiency. You basically don't really have to worry about it until unless you see that okay, there is a specific symptom which is usually associated with a specific nutrient. Then you can advise to your patients. Otherwise, there is no need. Okay. Anupama, I would suggest that don't involve yourself in the surgical cases. सर्जिकल केसेस के टाइम पर स्पेसिफिक जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन हॉस्पिटल में है, आप उनको रेफर कीजिए. प्लीज डोंट बी अफ्रेड टू रेफर. All of us are not specialists of everything. अगर आप मुझे पूछेंगे कि आईवी से क्या क्या जाना चाहिए किसी पेशेंट को, so it will take me some time, to go through everything and understand everything and go to it, because I am not right now working in a hospital setting, right? So a person who is working with the ICU patients in the hospital setting can tell कि अच्छा उसको IV tube से क्या nutrition जाना चाहिए. Okay, उसका पूरा, there's another society for total parenteral nutrition. Okay, so if you are dealing with severe surgical cases and you feel inadequate to do it, you don't have enough knowledge, don't get into it. Please tell them to ask the specific clinical nutrition for your surgical cases. ठीक है, क्योंकि surgical cases की settings अलग होती हैं. ठीक है, so you can just tell them and refer it to them. Find out who is the clinical nutritionist, find out the nutritionist in the area. She can guide them very well. She will be dealing with such cases on a regular basis. She will be knowing if at all supplements are required or not. Okay. Shireen, is there any limit for fats? Ideal is 30%. Yes, Shireen, ideal is mostly 30%. 30 to 35% हम teenagers को 35% तक देते हैं, but mostly उससे ज्यादा नहीं जाते. गंगा, न्यूट्रिशनल यीस्ट कंजम्पशन डेली बेनिफिशियल उन लोगों के लिए है जिनकी डाइट में B12 की डेफिशिएंसी है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है. Okay, Dr. Prachi, please ask your question. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Can you be a little louder? I can't hear you well. Now it's okay. Now it's okay. मैम पीसीओ में जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, तो हम रेगुलर बेसिस पे हमारा जो परसेंटेज ऑफ 50, 30 एंड 20% है, तो उसमें ये फैट परसेंटेज बढ़ाना और इसमें ये कम करना है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स? पीसीओडी में अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने आपको फैट मैक्रोस का क्या बताया है? फैट तो उनका अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो सीड्स वगैरह आएंगे, तो फैट्स तो हमें उनको देना ही है. ठीक है, नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग इज पीसीओडी के मैक्रोस, एनीबडी कैन टेल मी पीसीओडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? 45 to 50 बोला था आपने. 45 to 50% फैट नहीं, ये अपना कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates 50%. How much is protein? प्रोटीन 30% देखना.
30% प्रोटीन मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करती डॉक्टर प्राची। सॉरी 40%? Protein 30%, I don't give it to anybody. 20%. 20%. And the fat which is remaining will be how much percent? 30%. Yes. Okay. So again, please don't take this as patthar ka lakeer. Okay, you can sometimes give them 60% also. 60, 15 and 35 like that also you can give. But PCOD के जो patient होते हैं वो usually overweight होते हैं, तो इसलिए हम 30% से ज्यादा फैट उनको नहीं देते हैं। ठीक है। अनदर थिंग इज कार्ब्स रिड्यूस करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट इन द डाइट। फॉर अ नॉर्मल पर्सन यू डोंट हैव टू रिड्यूस कार्ब्स। ओके, देयर हैव टू बी अ स्पेसिफिक रीजन कि आप कार्ब्स को 40% तक लेकर जा रहे हैं या 35% तक लेके जा रहे हैं। तो उतने कम लेवल पे अगर आपको लेके जाना है तो आपके पास कोई रीजन होना चाहिए क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। फैट लॉस के लिए कर रहे हैं, इट्स अ वेरी फ्लिम्जी रीजन। फैट लॉस, वेट लॉस, इन सब चीजों के लिए कार्ब को इतना नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कार्ब को नीचे ले जाएंगे, बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपको फैट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, एंड फाइबर नहीं जाएगा डाइट में। अगर आप फैट्स और प्रोटीन्स बढ़ाएंगे तो फाइबर कम हो जाएगा। फाइबर मोस्टली कार्ब के सोर्सेज में से आता है। मैम मैंने जो आपको ये भेजा था ना, स्टडी भेजा था ना, तो मैंने 50%, 30% और 20% ऐसे किया था। तो That is fine. बट आपने वो स्वैप करने के लिए बोला, तो मुझे वो समझ में नहीं आया। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। That I have to look into the particular case study. Okay, so I will look into it and I will explain it. अगर समझ में नहीं आया तो I'll explain it in that paper itself. Okay, यही मेरा प्रॉब्लम था, क्योंकि हम लोग तो मतलब ये ऐसे 20%, ये केस में आपने 50% क्यों बोला? मतलब कुछ स्पेसिफिक रीजन है या कुछ है? तो इसके लिए हाँ, तो मुझे वो समझ में नहीं आया कि ये केस में इतना क्यों बढ़ाया हमने। एक्चुअली फैट तो हम लोग 20% ही देते ज्यादा से ज्यादा। नहीं, फैट 50% मैंने नहीं बोला होगा। It has to be something else. The carbohydrate, no, fat cannot go till 50%. If it is, I have sent it, then it is by mistake. Something else has happened there while correcting it. 50% you cannot give fat. Okay, that is you can't do that. क्योंकि आपने वो एरो किया है और उसके बाद में आपने वो स्वैप करने के लिए बोला है परसेंटेज। तो हाँ, तो मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो क्या है। जस्ट चेक कि मैंने स्वैप करने के लिए क्यों बोला, बिकॉज मे बी टाइपिंग मिस्टेक अगर कहीं होगा आपसे, तो फैट की कार्ब्स की जगह फैट लिखा होगा, फैट की जगह कार्ब लिखा होगा, ये हो सकता है। तो जस्ट चेक वंस, because your carbs will be 50, protein will be 20 and your fat should be around 30%. मैंने क्या लिखा है मैम? 50% प्रोटीन, 30% और फैट्स 20% लिखा था। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने 50% दिया था, प्रोटीन 30% दिया था। तो प्रोटीन आपने 30% कर दिया, प्रोटीन 30% नहीं करना है डॉक्टर प्राची। ओके, डोंट डू प्रोटीन 30%, दैट इज व्हाट यू हैव टू स्वैप। Your fat at 30%, protein at 20%. 30% protein is very it is not sustainable. You want to move your client towards a diet which is sustainable for life. PCOD 2-4 महीने की डाइट से ठीक नहीं होता। It is not jaundice. Okay. तो इसलिए उसको आपको स्टेबल डाइट पे रखना है। So you have to reduce that protein content and increase the fat content accordingly. ओके मैम, तो वो वहां पे स्वैप, मतलब वो जो एरो है ना, वो वहां पे गया है। You have to swap the percentage of fat and your protein, not the carbs. ओके, थैंक यू मैम। एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि पीच मतलब बैक के ऊपर जो ब्लैक होता है उसके उनके लिए कुछ मतलब स्पेसिफिक है क्या? उसका रीजन है क्या? क्योंकि वो हमारे इसमें हुआ नहीं है। मतलब जस्ट लाइक आई थिंक PCOD के पेशेंट्स के पिगमेंटेशन होता है। That's a symptom. Not only PCOD, I'm talking about normal people. What age group? 35, 40 to 50%. See, pigmentation can happen for more than one reason. Again, that is what I said. Please don't ask me symptoms. I am not going to be able to tell you कि ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। नो मैम, मैं कोई मतलब मैंने ऐसे सुना था कि बीपी नॉर्मल नहीं होता है, बीपी का इशू हो रहा है, उसकी वजह से होता है। मतलब आई एम आस्किंग ओनली, मैं आपको ये नहीं पूछ रही हूँ। 30 anyways you should go for a full body checkup. But yearly full body checkup होना चाहिए, तो उसमें हमें जो भी अगर कुछ होगा तो वो सामने आ जाएगा।
मुझे मतलब मुझे Definitely. ऐसा लगता है कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता होगा क्या, ओनली सिर्फ थोड़ा सा ऊपर ब्लैक के ऊपर, मतलब ऐसा एक पेशेंट आया कि थोड़ा सा ब्लैक के ऊपर, तो ऐसा हो सकता है क्या? No, 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 no. Why did you think so? What is the role of iron in pigmentation? Then you should be able to explain that. एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि बॉडी में थोड़ा आयरन और B12 वगैरह ऐसा कुछ कम होगा, क्योंकि अभी कैसा मुंबई में थोड़ा मतलब वो सनलाइट ज्यादा नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई ये होता होगा, मतलब No, दिस इज no, माय vitamin D people are getting from the diet also. They are getting it from egg yolks. They are getting it from milk as well. छोटे quantity में मिलता है, but उसमें से भी मिलता है. Okay. So if you are saying that such spots are because of deficiency, why do you think they are because of deficiency? You should be able to explain that. What is the role of iron and B12 in skin pigmentation? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है पता है, बहुत Why सारे did हमने you think of कहा vitamin A and E? अगर आपको skin ही देखना है तो vitamin A और vitamin E के बारे में क्यों नहीं सोचा? Why क्योंकि you have ऐसे thought पढ़ा about था, iron and B12? क्योंकि मैंने ऐसे पढ़ा था बी कॉम्प्लेक्स का इश्यू होगा, B12 का मतलब ऐसे ये होगा, कहाँ पे तो So ऐसे this is आता है very ना। vague, Dr. Prachi. I'm not going to answer this. This is very weak. Okay, ओके just like that, I can't comment on it. Okay, now there's another question. If body weight is more than 100 and then we reduce 500 calories from TDE, so more we can reduce. Parul, I would suggest don't reduce more क्योंकि हमें एक ग्रेजुअल वेट लॉस चाहिए. सडन वेट लॉस में क्या होता है कि जो इतने हाई ओबेसिटी वाले होते हैं उनका फिर बाउंस बैक करता है तो फिर जल्दी से जाता नहीं है. So just reduce, tell them that it will going to take 6 months, a year at least to get them to a certain amount of weight loss, like 10 kgs or 12 kgs. So slowly they are going to feel better about it. Okay? So no need to reduce more than 500 calories because अगर हम ज्यादा reduce करेंगे weight loss होगा लेकिन हम उतनी कम calories को कितना sustain कर पाएंगे, that is the thing. Okay? Shrestha, if a person is physically active and can burn higher amount of fats, can he increase fat percentage? No. Tea and coffee contains polyphenol which act as antioxidant. Then why we avoid tea and coffee in a balanced diet? Tea जो आप जो polyphenol compounds की बात कर रहे हैं ना अनीता, that is coming from green tea. That is not coming from your adrak wali chai. Okay. Coffee, yes, coffee a person if they want to have, we don't उसको क्लाइंट की डाइट से पूरी तरह हटाते नहीं है. ओके, वी कीप इट इन द क्लाइंट्स डाइट, लेकिन आपको क्लाइंट की जो स्लीप टाइम है और जो उसकी लास्ट कॉफी है उसमें 8 आवर्स का गैप जरूरी है. Okay, there should be a gap of at least 8 hours. The sleep time is 10 o'clock. The last cup of coffee should be finished by 3 o'clock in the afternoon. Okay, and yes, they interfere with a lot of micronutrient absorption. प्रियंका लैक्टोज इंटॉलरेंट को चार्ज दे सकते हैं? यस. Parul, can you please raise your hand? I'm not understanding your question. Parul Mishra, please can you raise your hand? Okay, after the few questions, I think everybody has logged in. I'm going to see we are going to go through the meal exchange planning again because a lot of people have confusion. Okay, Parul, please unmute. The question I'm not understanding. यस मैम. मैम मैं ये पूछ रही थी ना कि जैसे किसी भी फूड आइटम को ले लें तो उसमें कैलोरी का एक अलग से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो मैम कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा था. Calorie is the energy that the body will get. Carbohydrates is a nutrient जो हमें कैलोरी देता है. कार्बोहाइड्रेट से भी कैलोरी मिलती है, प्रोटीन से भी कैलोरी मिलती है, फैट से भी कैलोरी मिलती है.
ठीक है, तो जब कैलोरी की बात कर रहे हैं किसी न्यूट्रिएंट लेवल पे, तो वो पूरी सबकी कैलोरी मिला के देता है, ठीक है, वो सिर्फ कार्ब्स की कैलोरी नहीं बता, ठीक है, इज इट क्लियर ना? Parul, can you hear me? Is it clear now? Okay. Is it clear? I'm not able to hear you. All right. Shireen, we don't have chapters covered for bone health. Yes, we don't have chapters covered for bone health. Menopause के लिए अलग course है. You can join that. Soumyashri, do we need to depend on Intuitive app for macro distribution? Soumyashri, the apps are for you to take some help. If you take the help of Intuitive, then it is more specific, you know. Then you can be more specific in your recommendations. प्रियंका, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर अगर 2500 आ रहा है तब भी हमें टोटल डेली एक्सपेंड, yes of course you have to take it out daily. Piles is a surgical patient. I will not be discussing that. Ganga, no, you cannot take bread as a source of yeast because अगर आप उसको पकाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा उसमें, ठीक है, yeast मर जाएगा. So you're not going to get any probiotic benefits, and nutritional yeast you are taking in yeast. Okay. Gut brain axis, Samarvit, we will see if we have time. I will touch upon it, but it is not the main course से related नहीं है, so we are not going to go into that much. उसका आप अलग से you will have to study. अनुपमा, एग का अगर सिर्फ वाइट पोर्शन लेते हैं तो उसका प्रोटीन डिवाइड हो जाता है क्या? उसका प्रोटीन डिवाइड नहीं होता, जितना एग में प्रोटीन है वो मेजॉरिटी प्रोटीन सब कुछ वाइट पोर्शन में है, योक में मेजॉरिटी फैट है आपका. मेहर, कोई भी और डाइट प्लानिंग के कोर्सेज के बाद अगर आपको बात करनी है तो आप कोऑर्डिनेटर से बात करिए. आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट. So right now I'm going to first share how to do the exchange planning once more, so that anybody who has questions regarding that. I will not be discussing any content which is out of our course. जो हमारे course से अलग content है उसको I am not going to discuss. This extra class is for something which you have not understood in the class. Then only those topics only we are going to touch. If there are any other questions, please, I will not answer them. We have a lot of questions here. A lot of people from different batches are here. So please respect everybody's time. Vanaja, after cooking, are we not getting the benefits of B12 from our diet? You will get the benefits of B12 from your diet, but बहुत ज़्यादा heat treatment में B vitamins थोड़े affect हो जाते हैं. Okay, everybody is, please see the screen and let me know if you are familiar with this exchange table or not. जो familiar नहीं है वो please take a picture of this table on which we are usually basing our calculations. Okay, and anybody who wants to make very specific diet plans, I would suggest there's a book by your Dietetics Association, The Nutritive Value of Foods, and it is produced by NIN Hyderabad. Okay, I will just write the name just a minute.
I'm writing it here. Please note it down. इसकी publication है, ठीक है. NIN is National Institute of Nutrition, जो हैदराबाद में situated है इंडिया का. ठीक है, वो न्यूट्रिटिव वैल्यू फूड्स निकालते हैं, वो स्पेसिफिक बताएंगे. जहां यहाँ पे हमने मिल्क लिखा हुआ है, लेकिन उनकी बुक में लिखा हुआ होगा काउज मिल्क, गोट्स मिल्क, बफेलो मिल्क. ओके, सो यू हैव डिफरेंट fat values, different protein values, different energy values for different kinds of milk there. Anybody who wants to give specifics, who wants to know the specific, the whey protein, the paneer, how much is going. If you want to know for specific foods, you can buy this book. It is available online and you can use it. Okay, that is how we used to do. Because if we want to be very specific with our macronutrients and micronutrients requirements, then you have to take, फिर हम ये नहीं ले सकते कि सीरियल्स में इतना है. हम ये लेंगे कि गेहूं में इतना है और रागी में इतना है, बेसन में इतना है. तो that I will get from this book which is there. And that is why we are always actively telling everybody to use the Intuitive app or use the Healthify Me app, because there for specific foods and specific recipes, you are going to get all the energy, proteins, fats, iron, everything. You are going to get the values in that. Okay, even in this book, we are going to get everything micro and macronutrients. Okay, you have to understand that the meal exchange plan जो होता है, this is based on averages and approximations. जो इसमें आपने वैल्यू निकाली है वो 100% उसको आप नहीं मान सकते. This is just a tool for us to make a quicker diet plan. But if you want to be very specific, then take कि मूंग की दाल का कितना है, मसूर की दाल का कितना है, राजमा में कितना है, एनर्जी कितना, प्रोटीन कितना, कार्बोहाइड्रेट कितना, फैट कितना, B12, whatever micro and macronutrients you want to know. Then if you want to get specific, these are the specifications that you have to work with, right? So please understand that ये जो table है, that's a tool for us to do quick calculation. They will never be exact. If you say that मैं मेथी और drumstick को compare कर लूं, yes, they are in the same thing. They probably have the same energy and proteins and fats as well. पर micronutrients में difference आ सकता है. Okay, so be aware of that. But when you are looking at the day-to-day conditions on the basis of the client, you have to take approximations. Every day, nobody is going to chart out how much liya, kitna khaya, kya quality liya, kaun si variety ली, ठीक है? So you will not be able to do that on a day-to-day basis. Hence, this was curated. And this gives a fairly good idea of what your diet will look like. And this gives you a fairly balanced diet. Okay, I hope everybody is very sure. And nobody, please don't ask me that how can you equate fish with mutton. I cannot. But they are the same food group. That is why we are taking out a general average and using this one. Meher, no, it is not compulsory to take everything from this, because if you are vegetarian, you are not going to take meat, right? If you are lactose intolerant, then you are not going to take milk and milk products. So no, it is not compulsory. But if you are able to take from all the food groups, that will be a better option, right? Bhavani, I am going to give you nuts and seeds. Nuts and seeds usually fats के साथ compare करते हैं हम, fats के साथ include करते हैं, लेकिन उसमें protein होता है, तो I am going to give you that back. Okay, so this is the nuts. Who asked for nuts? Please, this is the values for nuts. You can just add it here. यहाँ नीचे add कर दीजिए. 30 grams एक portion होता है. 100 kilocalories आ रही है उसमें से. 5 grams proteins आ रहा है. Okay. And this is the fats in that. Okay. Now nuts का हमने ये लिया है, but there can be different values depending on the type of nuts you are taking. Okay, you cannot compare almonds with flax seeds. Okay,
Yes, 30 grams of raw cereals will give you 100 calories is what the average has taken out. ठीक है? I hope everybody has understood the table. समझ में आ गया है टेबल, समझ में आ गया है कि टेबल क्या कर रहा है, टेबल में क्या शो कर रहे हैं, क्या ये चीज समझ में आ गई है? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स yes. 5, 6, 7. Okay, out of 56, only 11 people have told me yes. 12. Still, not even half the people have understood the table. इसने मुझे yes. Sunidhi, I'm asking, have you understood what this table is showing? Question is also. Yes, Mamta, thank you. I have explained it in detail a lot of times. So now I will not go back to this table again. What this table is showing, it is an approximation. Please understand that. ठीक है? Now, if I have this table, this is my tool. I don't have Intuitive app and I don't have Healthify app, but I have this table. So on the basis of this table, I'm going to create my diet charts and diet plans, right? So in creating my diet chart and diet plans, I am going to create another table where I have written the number of exchanges that I have. So if I have taken 6 exchanges of cereals and millets, then I have 6 multiplied by 30 grams of cereals, that is 180 grams of cereals and millets here. Since cereals and millets are giving me 3 grams of proteins for one portion, this protein is coming out to be 6 into 3, that is 18 grams of proteins. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम्स है एक पोर्शन में, तो 6 पोर्शन में हो जाएंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज योर 120 grams. This is simple multiplication. If a teenager is obese, then you have to reduce the calorie which they are using and you have to plan a diet according to it. Again, what is the requirement? उसमें से 500 हटा दीजिए, right? It is the same thing. Okay, so you have all the values of 6 portions of cereals, 2 portions of pulses, 2 portions of eggs, 5 portions of milk and milk products. This is a teenager, so they will have enough amount of milk and cereals and pulses depending on how many calories you want to give to the person. Now, अब आप ये ध्यान रखिए कि ये जो मेरी कैलोरीज आई हैं, ये रोज इतनी कैलोरीज नहीं जा रही है. अगर मैं ये ग्रुप्स भी अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगी तो भी एवरी डे if I actually take each and every food items, that my calorie will not be 2380 all the time. It can be 20, 2420, it can be 2180, you know, things like energy up and down daily basis पे हो सकती है, but overall पूरे वीक में आपकी एवरेज एनर्जी इतनी बैठनी चाहिए. ठीक है, एवरेज एनर्जी इतनी आनी चाहिए और मेरा एवरेज प्रोटीन इतना आना चाहिए. ठीक है, फैट्स ऑफ कोर्स आप इनफ अमाउंट्स में फैट्स भी लेंगे एंड यू आर गोइंग टू कंसीडर एवरीथिंग व्हिच इज इनसाइड द फूड एज वेल. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल who are not taking pulses, when they are calculating for fats, they are ignoring the carbs and the pulses. Okay, please take this into consideration because they are also coming as invisible fats. Okay, only the visible fats are not the fats, is the invisible fat. Yes, for green leafy vegetables, for other vegetables, you can exclude them because they are really like in decimal points for 100 to 200 grams. But otherwise, you should consider the fats present in cereals, pulses, and non-vegetarian foods, etc. Please, मेरे screen पे annotate मत कीजिए, ठीक है?
Yes, Yamini, you have got it correct. The number of grams divided by the number of portions, that is your number of exchanges. Arohika, please raise your hand. I am not understanding what you didn't understand. Arohika, please raise your hand so that I can see you. Okay. You raise your hand, I can clear your doubt. Neetu, please ask your question. Have you understood till here? Because I've taken this thing quite a bit times. Yeah, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, yeah, till here it's clear. But my question is there, ma'am. Actually, me and my son yesterday had a discussion on moong, sprouted moong. Because on the packet of moong, it is written that 100 gram of moong sabut is having 24 gram of protein. And when we sprout it, it will raise up to 9 to 12%. So that is correct, or we have to take only sprouted moong 100 grams? How we have to take No. it in a diet? No, when we are calculating according to the exchange, that time you are considering the raw moong. Uska fir aap kya bana rahe ho? That is depending on you. Okay, we have to consider raw moong. Raw. Here जो यहाँ पे जो वैल्यूज दी रखी हैं वो निकाली गई है रॉ फूड से. So 30 grams of pulse अगर आप raw लोगे तो वो फूल करके 100 grams of sprouts हो जाएगा अपने आप. Okay, ma'am, because in Google I searched, because nutritive app is not giving anything regarding this. But Google is saying that 100% of sprouted moong is having 32 gram of protein. Is it correct? 100 grams of sprout. That means they are already saying that your this thing is 100 grams. The moong that you have taken, it is sprouted for 100 grams. Yes, the protein content and the micronutrient content increases. So values can differ. That is what I was trying to say, that if you ask me for specific foods, that is why you should use apps, because specific foods का अगर आपको चाहिए तो आप उसमें से लीजिए, books में से लीजिए. आप सारी बुक्स ले लेंगे तो भी मार्जिन ऑफ एरर रहता है, क्योंकि सॉइल कंटेंट में कितना आता है न्यूट्रिशन और वो सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं. वैरायटी ऑफ क्रॉप में भी डिफरेंस होता है. ठीक है, आपने गेहूं के बारे में सुना होगा, एक शरबती गेहूं है, दूसरे टाइप का गेहूं है. ओके, चावल की वेराइटीज आपको पता है, हम सब कुछ राइस में गिन रहे हैं, बट वो वेराइटीज तो अलग अलग हैं. सोना मसूरी अलग है, लाल वाले अलग हैं, बट दे आर ऑल राइस. So we are, of course, this is not the accurate value. This is the average of everything. Okay. So if you want particular values, then you should take particular food stuff और particular values आप लेकर आप calculate कर सकते हैं अपने PhD. We have to take raw things, then we have to calculate the values of everything raw. In this, yes. If you are using this method, yes. Raw is to be calculated. Okay. Thank you, ma'am. All right. आरोहिका, आपको समझ में आया? मैम नंबर ऑफ एक्सचेंज समझ में नहीं आया. नंबर ऑफ एक्सचेंज, देखो आपको ये तो पता लग गया कि एक एक्सचेंज में 30 ग्राम्स होता है. अगर चावल ले रही हूँ तो एक्सचेंज में 30 ग्राम्स हो रहा है. ठीक है, लेकिन मेरे को पूरे दिन में सीरियल्स कितने खाने, दाल भी खानी है, चावल भी खाना है, सब कुछ खाना है. दाल सपोज रोटी और चावल दोनों खाना है मुझे. ठीक है, और सबको सीरियल्स एंड मिलेट्स में कंसिडर करूंगी मैं. ठीक है, तो मेरा पोर्शन 30 ग्राम्स का है. तो मैंने जब पूरे दिन भर में रोटी और चावल के 6 पोर्शन रखे हैं सपोज. ठीक है, तो एक पोर्शन मेरा 30 ग्राम्स का है, तो 6 पोर्शन कितने ग्राम के हो जाएंगे? 180 ग्राम के हो जाएंगे. मतलब मुझे 6 पोर्शन का मतलब क्या होगा इसमें? 6 पोर्शन का मतलब ये हुआ कि मैंने 30 के 6 पोर्शन मान लिए हैं. ठीक है, वो दिन भर में मुझे कंज्यूम करने हैं. ओके मैम. दिस इज हाँ, दिस इज द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस. ठीक है, एक पोर्शन मेरा 30 ग्राम्स का है. दिस इज ऑल 1 यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंज नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये सारे 1 होंगे. नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 1 1 1 1 1. लेकिन यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस लिखे हैं क्योंकि हमने 1 से ज्यादा लिए हैं. ठीक है, तो अगर मैं पल्स के 2 एक्सचेंज लूंगी तो एक एक्सचेंज मेरा 30 ग्राम्स का है, तो यहाँ पर मेरे टोटल कितने पल्सेस में खाऊंगी? 60 ग्राम पल्सेस. ठीक है, अंडरस्टूड? यस मैम.
Okay. Is anybody who is not clear till up now? Anybody who is not clear up till now, please let me know. Put it in the chat box that you are not clear, so I will go through it again. If you're now, I am not going to go through it again anymore. Okay, I am not going to go through it again anymore. तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे अभी के अभी बता दीजिए. तो I will repeat it right now. After that, I will not repeat. प्रोटीन कैसे कैलकुलेट किया? सौम्यश्री, एक पोर्शन में कितना प्रोटीन है हमारे पास? सपोज पल्स लिया, एक पोर्शन में मेरे पास 6 ग्राम्स प्रोटीन है. मैंने पल्स के यहाँ 2 पोर्शन लिए हैं, तो मेरे पास कितना ग्राम प्रोटीन आना चाहिए? 6 multiplied by 2. ठीक है, 2 6 are 12. ठीक है, महर ग्राम सिर्फ ये बता रहा है, जैसे एक पोर्शन में 30 ग्राम्स था, तो ये बता रहा है कि 6 पोर्शन में 180 ग्राम है. ठीक है, 180 ग्राम्स है. पल्सेस मेरा एक पोर्शन में 30 ग्राम्स था, तो यहाँ पर 2 पोर्शन लिए, तो यहाँ टोटल पल्स जो दिन में खाने वाले हैं वो 60 ग्राम्स है. ठीक है, आई होप दिस टेबल इज नॉट वेरी कंफ्यूजिंग. ठीक है, जैसे आपने ऊपर वाली टेबल देखी होगी, तो उसमें पोर्शन ग्राम्स में बता रखा है, क्योंकि ये सारा एक ही पोर्शन है. ठीक है, 1 portion is 30 grams. Here I have got 6 portions, that is, तो ग्राम्स कितने हो गए मेरे सीरियल्स के? 6 into 30, that is your 180. Okay, I hope that is understood. Understood? जिसको समझ में नहीं आया प्लीज मुझसे अभी पूछ लीजिए, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगी. Samarvit, in which category we mentioned zinc? Samarvit, this table is only for macronutrients. For micronutrients, this category is not good enough. It is inadequate. Soumyashri, I am not understanding. You know, अगर आप प्रोटीन, आप जरा मुझे हैंड रेज करिए एंड अनम्यूट करना है मुझे. ओके ओके. Yes, Good Soumyashri. afternoon, ma'am. Good Yeah, afternoon. I was thinking in the last column, the energy calculation in the cereals and millet it shows 600. So how that calculation has come? Every calculation here is a multiplication of the table. Okay. For example, Okay. in one exchange, you are having 100 calories, correct? Yes, See the table above. One exchange is having 100 calories, isn't it? yes, Okay. Egg, one exchange is having 85 calories. Milk, one yes. exchange is having 70 calories. But my Okay. number of exchange for the day has changed here. Okay. Got it. So if I'm taking milk, which is having 70 calories in one exchange, so in 5 exchange, it will have 70 multiplied by 5. Are you following me? Come again. If one exchange of milk is having 70 calories, then if I am taking 5 exchange of milk, then how many calories should come? 70 into 5. Yes, that is your 350 calories. Okay. Okay, that is how So- we have calculated everything here. So this calorie is not mentioned here in the table, right? Energy is depicted in the form of kilocalories. In this table, I have written energy. If you want, you can change the title and change it to kilocalories as per your understanding. Okay. Okay, but now you mentioned that milk is 70 calories, no? So 70 into 5, it was mentioned, which is 350. That is what it is written here. Can you see it? Yeah. Yeah, that I saw, but for this 70, which table it is there? Soumyashri, you have not done this one. See, 70 it is mentioned in this energy. Okay, ma'am, got it. Okay, Right? got it. Yeah, Is yeah, there- thank you. Okay.
So every Okay. calculation will happen because the values for first portion is given. Okay. Okay. So just go through that lecture again, or go through my recordings of this one, the recordings of what we have discussed in the interactive sessions. I have explained this in fair amount of detail. That is why I'm going really slowly this time, because an extra class has been taken just because of this. I know this concept is a bit tricky, but we have gone through it many times. Vijay Lakshmi, okay, just a minute. Bhumika, if you're giving egg white only, then fat you will reduce to 0. Yes. Yes, Mamta, same things I have in my mind. Misab, I am not aware of the app for source of vitamins, but you can look into it online, or you can just create your own list. Okay. First, has everybody understood this here? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे अभी बता दीजिए, इसके बाद मैं इस टेबल पे नहीं आऊंगी. अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज टेल दैट आई डोंट अंडरस्टैंड इट. प्लीज लेट मी नो. Who doesn't understand this table now? Okay, is there anybody who doesn't understand this table? Arohika, what you don't understand in this? Please, please let me know what you don't understand. मैम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस में जैसे कि जो 6 हम पोर्शन लेंगे तो उसके अंदर जो हम पूरे डे में लेंगे उसका है ये. उसका हाँ पोर्शन है. हाँ. ओके मैम. ठीक है, तो जितने भी आप एक्सचेंजेस ले रहे हो पूरे दिन की कैलोरी कैलकुलेट कर रहे हो ना. आप लंच की डिनर की अलग अलग कैलोरीज तो नहीं कैलकुलेट करते हैं हम, है ना. हमें तो टोटल दिन में जितनी कैलोरीज जा रही है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो हम पूरे दिन का कैलकुलेट करते हैं. तो दिस इज गोइंग इन द होल डे. ठीक है. कितना टाइम हम उस सीरियल मिलेट्स में ले रहे हैं? सीरियल्स एंड मिलेट्स में मैंने यहाँ 6 एक्सचेंज लिए हैं. उसको मैं दिन भर में कैसे भी खिला सकती हूँ. ब्रेकफास्ट में खिला सकती हूँ, मिड मॉर्निंग में खिला सकती हूँ, डिनर में खिला सकती हूँ, लंच में खिला सकती हूँ. कैसे खिलाना है, कब खिलाना है, वो अभी मेन्यू प्लानिंग पे हम नहीं आए हैं, पर कितना खिलाना है वो अभी डिसाइड करना है. ओके मैम. ठीक है, थैंक यू. अंडरस्टूड. यस मैम. Miss Sab, you are focusing too much on vitamins and mineral sources. अगर आपके पेशेंट्स के साथ डेफिशिएंसी का डिजीज है तो आप पर्टिकुलर उसका आप सोर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, या फिर उनको सप्लीमेंट दे सकते हैं. लेकिन विटामिन एंड मिनरल्स ना बहुत जनरल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डाइट्स में. उसके आपको सोर्स की लिस्ट खुद देखनी पड़ेगी. वी डोंट प्रोवाइड दैट. ओके, बट हमने बहुत जगह जहां पे हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इफ यू आर फ्रॉम एडी एंड बैच, in micronutrients we have discussed everything. Okay, Banaja, please ask your question. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. मैम मुझे एक्सेल शीट क्या होता है? वही टेबल को एक्सेल शीट बोला जाता है क्या? नहीं, इस टेबल को एक्सेल शीट नहीं बोला जाता. माइक्रोसॉफ्ट में आता है एक एक्सेल शीट. लेट मी शो इट टू यू. जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ना, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट आता है. अब जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक्सेल शीट है. ओके, तो ये आपको अपने लैपटॉप में मिल जाएगा आराम से. तो आप इसमें अपना बना सकते हैं. तो एक्सचेंजेस एडजस्ट करने के लिए एक्सेल शीट मुझे इजी लगती है, सो आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ. So if it is easy for you, you can do it for yourself.
ओके जी मैम, और एक क्वेश्चन है मैडम, जैसे कि बताओ। डायबिटिक चैप्टर में एक जो टोटल एनर्जी कैलकुलेशन के लिए आप बताए थे कि मल्टीप्लाई द वेट ऑफ द पर्सन विथ 30 whose weight is 50 kg and age is 50, तो इसका मेरे समझ में नहीं है, जैसे कि हमने नहीं बना, जब वो हमने डायबिटीज के लिए नहीं किया होगा, वो हार्ट पेशेंट के लिए किया होगा, जिनकी अगर सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद उनको रिकवरी के लिए एनर्जी चाहिए होता है, तब 30 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी फैट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको कर लेते हैं, और हम टीडी वगैरह नहीं निकालते, क्योंकि तब हार्ट पेशेंट बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, बट दे नीड रिकवरी एनर्जी। सो दैट इज वाई जो हार्ट पेशेंट होते हैं जिनकी सर्जरी वगैरह हुई है, उनका हम टीडी फिजिकल एक्टिविटी ये सब नहीं निकालते, सीधा उनको 30 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम देते हैं, स्पेशली अगर वो अंडर वेट है। तो अगर वो नॉर्मल वेट है तो हम 25 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट देते हैं। 35 पर केजी 25 25, ओके, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके शिरीन, प्लीज जिन जिन के डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन, सो दूसरे लोगों का हाथ मुझे दिखेगा, एक साथ नहीं दिखेंगे बहुत सारे में। ओके, in the presence of any kind of sugar, the burning stops due to insulin hormone presence. So here, Shireen, never excludes fruit from your diet. ओके, चाहे रीजन कुछ भी हो, डाइट में से आपको फ्रूट्स नहीं हटाने हैं। विजय लक्ष्मी जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मैम मुझे ये आफ्टरनून। डाउट है कि पल्स का जैसे 2 पोर्शन लिया तो इसमें प्रोटीन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट से तो ज्यादा होनी चाहिए ना? ये तो मतलब नहीं, नहीं होती है ऐसा। प्रोटीन हमेशा किसी भी फूड में कम होता है, कार्ब्स हमेशा ज्यादा होते हैं। प्रोटीन और कार्ब्स का कोई कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है। एक प्रोटीन का दूसरे प्रोटीन के साथ कंपैरिजन हो सकता है, दूसरे सोर्स के साथ कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन प्रोटीन्स और कार्ब्स का कंपैरिजन नहीं होता। नहीं, सीरियल्स और पल्सेज में कंपैरेटिवली तो इसमें ज्यादा होता है ना पल्सेज में? नहीं, सीरियल्स अगर 30 ग्राम लोगे तो उसमें 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, दाल हाँ। अगर 30 ग्राम लोगे तो उसमें 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ग्राम्स को कंपेयर नहीं कर सकते, ओके ठीक है। दे आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ओके, थैंक यू। क्लियर? यस अनुपमा, वे प्रोटीन डेफिनेटली पनीर बनाते हैं तो वे प्रोटीन निकलता है। एज आई सेड, इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक, प्लीज यूज स्पेसिफिक एप्स, स्पेसिफिक बुक्स, स्पेसिफिक this one, but here we are going to work with approximation. Vijay Lakshmi, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, प्लीज पुट योर हैंड डाउन so that I can see other people's as well. Okay, Kayan, please ask your question. हेलो मैम। मैम मेरे Hello. को एक्चुअली हाँ जी ये पूछना था, जैसे किसी पर्सन को कुछ सब कुछ उसका सही जा रहा है, अगर मैं उसको 1500 की कैलोरीज दे रही हूँ तो उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी मीट कर रहे हैं उसमें? ये तो नहीं होगा कि माइक्रोस तो मीट हो रहे हैं बट माइक्रोस में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? अगर डाइट वेरिड होती, दैट्स व्हाई वी इंसिस्ट ऑन टेकिंग ऑल द फूड ग्रुप्स। अगर डाइट वेरिड होगी तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की प्रॉब्लम तब तक नहीं आएगी जब तक कि उसके सब क्लिनिकल डेफिशिएंसी नहीं है। अगर उसके सब क्लिनिकल डेफिशिएंसी है तो वी हैव टू कीप अ शार्प आई, अगर नहीं है देन इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। और मैम जैसे उसकी सारी रिपोर्ट्स मैंने देखी है, सब कुछ सेट है, मतलब ओके है सब कुछ, लेकिन उसको ट्रिगर होता है सनलाइट से और जैसे स्ट्रेस से थोड़ा हेडेक का, मतलब उसको ट्रिगर हो जाता है उस टाइम पे। तो हमने जैसे डिटॉक्स पढ़े थे ना, लिवर, गट, किडनी, तो मैं सोच रही थी इसमें से अगर कोई डिटॉक्स उसके लिए कुछ बेनिफिशियल हो नहीं, सकता है? ऐसे नहीं होता है। फर्स्ट यू फिगर आउट कि धूप में जाके उनको हेडेक क्यों होते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल दे सफर कि सडन टेम्परेचर चेंज अगर होता है तो बॉडी इज अकोमोडेटिंग। अगर वो हेडेक हो करके चालू रहता है बिल्कुल, देन यू हैव टू फिगर आउट क्या करना है। बट वो थोड़े टाइम के लिए अगर हेडेक रहता है और चला जाता है अपने आप से, देन यू डोंट हैव टू वरी, द बॉडी इज ऑलरेडी अकोमोडेटिंग, एंड लेट हिम ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड कवर हिज हेड इफ इट्स कॉजिंग अ प्रॉब्लम इन द सन। ओके मैम रहता है फिर बिना मेडिसिन लिए नहीं जाता है, रहता है, मैंने Okay. मतलब
और तो टेस्ट उनका भी हाइड्रेशन लेवल आपने देख लिया? या मैंने उनको इलायची वाटर दिया है बीपी, हाइड्रेशन के लिए। बीपी और हाइड्रेशन बीपी का देख लिया? बीपी मैम बीपी का देखा है, बीपी के अकॉर्डिंग डाइट दे दिया, बीपी भी हाई है, बीपी के अकॉर्डिंग दे दिया था मैंने। यही उनके थोड़े से रीजंस देखे थे कि इनका बीपी हाई रह रहा है, स्ट्रेस है, तो उनको मैंने उस हिसाब से डाइट प्लान करके दे दी। तो आई वाज वंडरिंग कि अगर कोई डिटॉक्स भी इनके लिए इनमें से हेल्पफुल है कि नहीं है, तो इसलिए मैंने पूछा था। जैसे एक्ने के लिए आपने बोला था हाँ, gut- I would not be able to tell you a detox for headache. Let me be very fairly ओके true to ओके। you. ठीक है? तो जैसे उनको मंथ में फिर मैं एक बार गट का दे दूं, एक बार लीवर का दे दूं, एक बार किडनी का डिटॉक्स, ऐसे जैसे हमने नहीं, पढ़ा है। एक तो मंथ में या तो आप लिवर का दोगे या फिर आप किडनी का दोगे या फिर आप गट का दोगे। मतलब एक 4 मंथ में मंथ में तीनों 4 डिटॉक्स नहीं डिटॉक्स। देने हैं। जी जी, एक 4 मंथ मंथ में में तीनों 4, हाँ, 4 मंथ्स में दूंगी, मतलब एक एक मंथ में एक एक डिटॉक्स में एक उसको एक दे डिटॉक्स दूंगी। तो मैम समटाइम्स क्या होता है, वेट रिड्यूस हो जाता है, पर फिर थोड़ी देर बाद फिर से बाउंस बैक हो जाता है। वो मतलब वही कैलोरीज चल रही हैं, वही सब कुछ चल रहा है, पर वो बाउंस बैक हो जाता है या फिर रिड्यूस ही नहीं होता है। मतलब बॉडी इतनी यूज्ड टू हो चुकी है डाइट्स की, तो उस मामले में हम क्या कर सकते हैं? अगर आपका वेट ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है तो उसको रिड्यूस होने दीजिए। उसके बाद आपको पहली चीज तो आपका रिव्यू हर वीक चलना चाहिए। ठीक है? थोड़े थोड़े टाइम में क्या होता है कि पेशेंट भी डाइट फिक्स नहीं रखता, वो बीच में चीट मील ले लेते हैं बीच में कुछ ना कुछ। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि वो चीट मील का लोड कितना आया है और उसकी वजह से उन्होंने वेट पुट ऑन किया होता है कभी कभी। Another thing is that body likes to be on a same weight. एक सेट पॉइंट थ्योरी होती है, बॉडी बार बार उस सेट पॉइंट पे आती है, तो हमेशा सिर्फ वेट को अगर आप लेके चलेंगे यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कीप अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स फॉर यू टू असेस। ओके, स्लीप, स्ट्रेस, योर एनर्जी लेवल्स, योर मूड लेवल्स, योर स्ट्रेंथ, योर स्टैमिना, ये सारी चीजें असेस करिए जब आप पेशेंट शुरू में आ रहा है तो। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू लेट योर पेशेंट का सब्जेक्टिव असेसमेंट आप करते रहिए, सो दैट यू कैन शो कि देखो आप वेट लॉस के लिए आए थे लेकिन आपको ये सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं बिकॉज यू आर फॉलोइंग अ गुड डाइट। सो डोंट फोकस जस्ट ऑन वेट लॉस बट ऑन द होलिस्टिक हेल्थ ऑफ द क्लाइंट एंड मेक हिम ऑल्सो रियलाइज दैट। ओके मैम, पर मैम जैसे कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमने जिंदगी दुनिया भर की डाइट्स ले लिया है, ये भी ले ली वो भी ले लिए, तो अब हमारा वेट इसीलिए लॉस। उनको प्रॉब्लम आएगी। ओके, मतलब उनको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हमारा भी तो वही साइंटिफिक अप्रोच तो सेम ही है, तो उनको फिर प्रॉब्लम आएगी इस चीज में। तो इसको मैम ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम? Patience. let them have a good diet. Let them say that you have to change your lifestyle. Don't go for diets which you can't sustain. ऐसी कोई डाइट मतलब जो चल ही नहीं सकती लंबी। ओके मैम, और मैम जैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट जिनका वेट कम होता है उनकी तो इजीली मेट हो जाती है, मतलब 60 तक भी वेट हो तो इजीली मेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती वेजिटेरियन लोगों को भी। तो अब जैसे किसी का 70 किलोग्राम्स वेट है, उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट 47 मैंने निकाला है, तो 33 या 35 तक चल रहा है, तो इज इट ओके या मेरे को सप्लीमेंट्स ऐड करने चाहिए? Supplements. ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Vanaja, what is hypoglycemic index? There is no hypoglycemic index. The high glycemic index have been explained in the diabetes video. Please, you look in the diabetes video. Okay, it's a big topic. I won't be able to cover it. We've already finished our time. Okay, I am basically here because a lot of people were struggling with meal planning. Okay. Kayan, one of your colleague is saying that the person with headache can have tell them to do nyasa with cow ghee. It will help the client for headache. I don't know what nyasa is. Okay. Vandana, please ask your question. Please, everybody else keep writing. Hello, ma'am. Hello. Hello, yeah. मैडम मुझे ये जानना है कि हम चने का और मूंग की दाल का स्प्राउट्स नाइट में या इवनिंग स्नैक में दे सकते हैं? Come again. मैम मूंग की दाल का और ये स्प्राउट और चने का जो काला चना होता है उसका स्प्राउट हम रात को डिनर में या इवनिंग स्नैक में दोनों में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं। या मॉर्निंग में बेटर किस टाइम रहेगा? जब आपका क्लाइंट इजीली ले सके तब आप दे दीजिए।
क्योंकि सुबह तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, शाम को ही हो पाती है। जब आपका क्लाइंट इजीली ले सकता है तब आप उसको दे सकते हैं, पर मैडम इसके कोई साथ टाइम का कोई रिलेशन नहीं है। ओके मैडम, कोई रेफरेंस बुक होगी जिसमें एग्जैक्ट अमाउंट लिखा हो, क्योंकि उसमें काफी वेरिएशंस है। अगर ऑनलाइन हम चेक करते हैं कैलोरी, उसके काउंट वगैरह में काफी वेरिएशंस है। कोई बुक है? I have already given the book. Please see the recording of this video. I have written it down. मैडम उस टाइम मेरे पेशेंट आ गए थे इसलिए मैं देख No नहीं पाई। problem. You can see the recording again. I have given it. ओके मैम, ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। Priyanka, please ask your question. Then we'll move on to meal planning. गुड आफ्टरनून मैम। मैम मुझे ये 45 ml फैट्स एंड ऑयल मतलब 3 टेबल स्पून ना? 45 yes, 3 tablespoons. हम फैट्स का हमेशा 1 टीस्पून के से मेजर करते हैं। That is why उसका exchange is 9, यानी कि 5 9s are 45. तो 5 ग्राम्स का आपका फैट का एक्सचेंज होता है। मैम एक्चुअली कैलकुलेशन तो मुझे बहुत स्टार्टिंग में ही मैं एकदम सॉर्ट आउट हूँ इसके लिए, बट मुझे यही मेरा ना एक्चुअली जब भी मैं मील प्लान करती हूँ तो मेरा फैट्स ही हमेशा कम होता है, तो मुझे यही मतलब 45 ml ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना? मतलब हम अगर कोई वेट लॉस जर्नी पे है तो वो उसको रिकमेंड कर सकते हैं ना? See, Priyanka, you are getting confused. 45 is my fats and oils. Okay. फैट्स एंड ऑयल्स में है, नट्स एंड ऑयल सीड्स भी हैं। तो ठीक है, अगर आपके नट्स एंड सीड्स के अलावा फैट्स एंड ऑयल्स भी डालकर अगर उनका फैट कम हो रहा है तो यू कैन टेल देम टू ईट हेल्दी फैट इन देयर डाइट. You can increase their nuts, or you can increase a bit of ghee or butter or olive oil in their salads and all, and you can increase that amount. There's absolutely no problem. अगर आपका इनविजिबल फैट कम है तो आप अपना विजिबल फैट हेल्दी फैट करके आप उसको बढ़ा सकते हो. The only thing is that you still don't want to give them fried food and processed foods, right? ओके मैम, ओके हाँ। और मैम एक चीज और, मैंने ना गट इशू से के लिए आपसे कंसल्ट किया था, तो मैम मैंने ना उनको एक्चुअली बटर मिल्क और ना एशगार्ड जूस मतलब मैंने बहुत सारी चीजें दी थी, पर उनको ना इन दोनों चीजों से बेसिकली बहुत प्रॉब्लम होने लगी। मतलब उनको हाथ पैरों में दर्द हो गया। और एशगार्ड जूस तो मैम मतलब मैंने तो पढ़ा था कि मतलब वो सुपर फूड में आता है, तो मतलब हमें किसी को भी रिकमेंड नहीं करूं क्या, या मैं कंफ्यूज हो See, गई Priyanka, be ready to fail from the clients, okay? Always. क्योंकि हर जना अलग होता है, हर जने को सूट करे ऐसा जरूरी नहीं होता है। कभी कभी रेसिपी के भी फर्क होता है, ओके? So what you have to focus on, always make yourself open to experiment, always make your client open to stuff. ठीक है, उनको बोलो ट्राई करके देखो, 1 हफ्ता 10 दिन ट्राई करके देखो, अगर आपको नहीं जचता है तो हम कुछ और ट्राई करेंगे, ओके? कुछ और ले लो. Anyways, the same thing you should not continue for a very long period. Even our seasons are changing every 3 months. So anyways, the diet is going to change every 3 months. So tell your patients, अगर उनको सूट नहीं कर रहा है तो कुछ लीजिए. हर कोई जना सुपर फूड पचा ले ऐसा नहीं होता है. हर एक का गट माइक्रोबायोटा अलग होता है, हर एक जेनेटिक्स अलग होती है, तो किसी को सूट कर भी सकता है, किसी को सूट नहीं भी करता है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके मैम। और मैम मतलब और मैंने ना एक पर्सन है, उनका वेट 111 है, तो उनके लिए डाइट प्लान किया, तो मैम उनका तो पूरा टीडी वगैरह सब निकाल के 2900 कैलोरीज आ रहा है। मतलब मैंने उसमें से 500 भी माइनस कर दिया था, तो मैम फिर उनको इतना ही हाई डाइट देना है? पहले उनकी जो करंट डाइट है आप वो असेस कीजिए, वो कितनी आ रही है. मैम ओके, वो जो एक्चुअली वो ना मोस्टली जंक फूड बहुत खाते हैं, तो एग्जैक्टली. सो फर्स्ट रिड्यूस जंक फूड, क्योंकि अगर जो रेगुलरली हैबिचुएटेड है जंक फूड खाने का वो छोड़ेगा नहीं एक बार. ओके, तो रिड्यूस दैट वन. यू कैन टेल देम दैट आप जो डेली कर रहे हैं उसको वीकली करिए, जो वीकली कर रहे हैं उसको मंथली करिए. दैट इज हाउ यू विल फेज इट आउट.
ओके 2900 कैलोरीज की टीडी माइनस करने के बाद डाइट आ रही है, उनको दीजिए, क्योंकि आप हेल्दी सोर्सेज देंगी, आप फैट्स देंगी, आप होल ग्रेन्स देंगी. व्हेन यू प्लान द मेन्यू यू आर गोइंग टू गिव अ मच हेल्दियर मील. तो अपने आप उनका पेट इतना भर जाएगा दैट ही विल नॉट मूव टुवर्ड्स जंक फूड व्हिच इज व्हाट यू वांट. Okay, so don't be afraid, but reassess after every week, because if he is at 111, he is going to lose at least 1 or 2 kgs, at least 1 kgs initially. तो जैसे उनका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाए तुरंत उनको रीअसेस करिए, कि देन योर वेट विल चेंज, योर बीएमआर विल चेंज एंड योर टीडी विल आल्सो चेंज. Okay, ma'am. Okay, thank you, So ma'am. every week you assess them. Okay. Okay, I am now moving on to this one, that how do you make menu plan from your exchange plan. Okay, whoever have not understood, please understand it. We are not going to have another lecture for this thing now. Okay, so here I have taken these many exchanges to come out for 2380 calories. Okay, so here I have given in the morning soaked almonds and walnuts, and I have added a cup of milk. So what I have used is, I have used 2 exchanges of milk here, 1 exchange of sugar I have used, 1 exchange of my nuts I have used here. Okay, 10, yes. Then by 8:30, I have given breakfast to the person. I have given an omelette of 2 eggs. I have put some amount of other vegetables, that is your capsicum. I have put some amount of roots and tubers, that is my onion. Okay, so you can decide that it can be 1/4 of the amount, 1/8 of the amount, 1/10 of the amount, as much as you want, right? Then 1 glass of orange juice, because I have taken around 4 fruits. I have taken 6 exchanges here. So my 2 to 2.5 exchange will be covered in this orange juice. Okay, I am going to use at least 2.5 oranges for this much ml of juice. Okay, then I am going on to the tiffin, because this is an adolescent. It is they are having a meal in between as a lunch box. So I am giving roots and tubers with my cereals. Aloo paratha. तो उसमें roots and tubers आ गया आलू में, पराठा में आपका cereals आ गया. Then I have curd, 1 katori. Okay, so my milk third exchange is coming right here. Okay, so that is my the distribution of exchange which I am taking. Then in the afternoon, अभी तक मेरी green leafy vegetables नहीं आई थी, मैं यहाँ पे रोटी में green leafy vegetables डाल दूंगा. I'm not giving him plain chapati, I'm giving him मेथी का रोटी. Okay, then I am giving him other vegetables as well. Chinna masala मैंने 1 कटोरी लिया, so I have given him other vegetables. Tomatoes will also come in this. Then I have given him a portion of dal, a big portion of dal, because my dal is not very thick. So 30 grams of dal will, after adding water, give me a big bowl, right? Then because this is an athlete, I am giving in the evening another fruits. I have used 2.5 fruits up, okay, and I can or up to 3 bhi ja sakta hai. So I have taken banana and grapes here. Okay, 1 banana and about 100 grams of grapes, which will come about like half or 3/4 of katori. Okay, so that much I have given to the client, and I have given him option of honey. So I will use my another sugar exchange here. Honey will come in the sugar exchange. Then lemonade and coconut water I have given for hydration. Then again at 6 I have given another fruit here. So you can see that my fruit is coming up to 6 exchanges, and I have given shake here. So my 2 exchanges of milk has again come here. So I had taken 5 exchanges of milk. 2 exchange मैंने सुबह के दूध के कप में डाल दिए, 1 exchange मेरा दही में चला गया, और 1 exchange बाकी के 2 exchange मैंने mango shake में डाल दिए. So that's a tall glass of mango shake which I have given to my client. And रात को मैंने चावल और सांभर दे दिए. अब जो मेरा बचा हुआ है सीरियल एक्सचेंज था, ठीक है, मेरे 6 में से 4 एक्सचेंज यूज अप हो गए आलू पराठा और मेथी रोटी में, और बाकी के बचे हुए 2 एक्सचेंज मैंने राइस के जैसे यूज कर लिए रात को. एंड जो बाकी का बचा हुआ पल्स एक्सचेंज था वो मैंने सांभर में यूज कर दिया. एंड जो रिमेनिंग अगर मेरे पास वेजिटेबल का एक्सचेंज बचा है, दैट इज ऑल गोइंग इन द सांभर. ओके, सो दिस जो रिमेनिंग मेरी अदर वेजिटेबल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, जिसका भी एक्सचेंज मेरे पास अब बचा हुआ है, वो सब मैंने सांभर में इंक्लूड करके 1.5 katoris of sambar I am giving it to my patient. So this is how I have planned a day's diet. Now ये suppose अगर मैंने मंडे को दे दिया, अब मैं ट्यूसडे को क्या करूंगी?
इस डाइट को मैं अपना मेन प्लान बनाकर इसी में चेंजेस करूँ, ठीक है। ऑमलेट की जगह मैं स्क्रैम्बल्ड एग्स दे सकती हूँ, ठीक है, या फिर मैं फ्रेंच टोस्ट दे सकती हूँ जिसमें मेरा एक एक्सचेंज ऑफ सीरियल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जिसमें एक ब्रेड स्लाइस चली जाएगी फ्रेंच टोस्ट में। और दोपहर में मैंने सपोज यू नो आई कैन गिव सीरियल ऑफ ओनली वन, जैसे कि मैंने दलिया का एक पोर्शन दे दिया, वेजिटेबल दलिया दे दिया विद सम टमेटो चटनी, दैट आई कैन गिव। Then afternoon में I can take a non-veg if I want to and I will remove the pulse. ये दाल हटाकर मैं non-veg दे सकती हूँ, मैं मेथी चिकन दे सकती हूँ उसको, और उसके साथ चपाती दे सकती हूँ, right? So my vegetables and my dal is getting removed and I am putting a meat portion here. अगर आप vegetarian है तो again you can put another, मेथी की जगह आप पालक का कुछ बना सकते हैं, ठीक है। रूट्स एंड ट्यूबर्स अगर आपके नहीं हुए तो आप आलू पालक जैसा बना सकते हैं, गाजर के साथ बना सकते हैं, ओके। सो दैट यू कैन पुट हियर, ठीक है। इफ यू आर मेकिंग कढ़ी, दैट मीन्स यू आर यूजिंग कर्ड, सो यू आर गोइंग टू टेक दैट कर्ड पोर्शन देयर इटसेल्फ, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर द नेक्स्ट डे, ओके। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू आउट द वीक, ठीक है। किसी किसी दिन अगर बाय चांस फ्रूट स्किप हो जाता है नेक्स्ट डे, आप उस फ्रूट की अमाउंट बढ़ा सकते हैं, ओके। सो जस्ट this thing, this changing and swapping will not come instantly sitting in one class. You have to continuously work with the client and continuously you have to make the diet. Is there anybody who has not understand how to convert meal exchange plan into a menu plan? किसी को ये यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Anybody who is not understanding the meal plan? शिरीन, डैश डाइट, आप डायबिटिक डाइट अगर आप जानते हैं तो आप डैश डाइट भी जानते हैं, बस उसमें सोडियम का कंटेंट आपने डिक्रीज करना है। यू कैन गो थ्रू द हाइपरटेंशन lecture again. So dash diet is very nicely discussed in that. Anupama, just wait for 1 minute. I want to know if everybody has understood till now because I'm not going to repeat it again. Anybody who has not understood it, please let me know. भूमिका, वन एक्सचेंज ऑफ मिल्क 250 ml नहीं होता है। आप एक बार एक्सचेंज की जो मेन टेबल है उसमें देखिए कि आप कितना ग्राम ले रहे हैं। जो मिल्क है आपका 100 ग्राम है, तो यहाँ जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो वो 100 ml होता है। एक कप दूध हमारा 250 ml होता है, तो 2.5 एक्सचेंजेस जाते हैं, लेकिन वो एक कप दूध आप एक सर्विंग जैसे कंसिडर कर सकते हैं, ओके। You know, today we are not sharing any sample diet plans. Today is for understanding what do you know about this. Yes, Manisha, please ask your question. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, nice to see you again. Ma'am, my question, आपने लाइक बताया था कि वाटर का जो रेशियो है वो जितना वेट है उससे 30 डिवाइडेड बाय 30 कर दे। बट मैम मेरी एक योगा सेशन चलता है, मैंने आरोग्यम से गया था योगा क्लासेस, वहाँ पे मैम एक मेंबर है जो कि उनको आइडियल वाटर लेना चाहिए 3 लीटर मैक्सिमम, बट वो 6 लीटर लेते हैं मैम। And is he okay with that? मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उससे? नहीं, अगर वो 6 लीटर ले रहे हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ है तो आई डोंट थिंक वी नीड टू इंटरवीन। ओके मैम, एक्चुअली उनकी हर्निया की सर्जरी भी होगी हुई है और एज ज्यादा नहीं है, 30 अप्रोक्स है।
नहीं, हर्निया से वाटर इनटेक का रिलेशन एज सच डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता है मनीषा. Okay? We don't have any relation with hernia and water intake. But if somebody is taking a certain amount of water and he is perfectly healthy, then we don't need to intervene. आप उनको बोलो कि अगर आप कभी कम भी कर लेंगी तो भी you are taking 6 liters and lot of time perception is very different. जो रिपोर्टिंग एरर आता है वो बहुत होता है, तो हम बोलते हैं 6 लीटर पर एवरीडे 6 लीटर वो नहीं होता है. इट इज नॉट दैट हाई बिकॉज इट विल कॉज, अगर आप रेगुलरली बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे इट विल कॉज ब्लड डायलेशन. ब्लड का डायलेशन हो सकता है उसमें, एंड दैट इज नॉट अ वेरी इजी कंडीशन. ठीक है, सो इफ ही इज क्लेमिंग दैट ही इज टेकिंग 6 लीटर एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन, वी डोंट हैव टू इंटरवीन विद एनीथिंग. ओके मैम. मैम तो मुझे लाइक जैसे मैं हूँ, मेरा मैक्सिमम आता है जैसे 3 लीटर मेरा आता है. मैं ज्यादा लेती हूँ तो फिर कोई लाइक कुछ प्रॉफिट तो है ही नहीं ज्यादा लेने से. 3 से ऊपर अगर मैं वाटर कभी गर्मी लगती है, कभी ज्यादा पसीने आते तो ज्यादा भी लेना चाहिए. ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं दे कैन इजीली टेक अप टू 6 liters because they sweat so much, because they are training so much. People who are working in the sun, they can take easily up to 5 liters because they are sweating so much. ठीक है, so do not judge this just by कि 2 से 3 तो जो सिटी एवरेज हमें मिला है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं. लेकिन अगर जरूरत है तो इंसान को अपने बॉडी के हिसाब से थर्स्ट अगर है तो पीना चाहिए पानी. ओके मैम, ओके, थैंक यू. Okay, Harinder Singh, how to calculate calories of aloo paratha? It is a long process. You have to weigh the boiled aloo. You have to weigh the amount of atta that you are using for that. You have to check how much oil you are using for the aloo paratha. Okay, oil or ghee or whatever you are using for the aloo paratha. You have to weigh that. उन सबको वे करके फिर आप उनके इंडिविजुअल कैलोरीज निकालेंगे और फिर उसको प्लस करेंगे तो आपके आलू पराठे की कैलोरी आ जाएगी. ओके, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. So if you want to do it like that, that is the exact process of calculating any calorie for any food. Okay, but if you want to know that कैसे करें, पेपर पे कैसे करें, तो फिर आप पोटैटो की अलग वैल्यू देंगे, गेहूं की अलग वैल्यू देंगे, आटे की अलग वैल्यू देंगे. उनकी अलग अलग वैल्यूज लेकर कितना अमाउंट आपके पराठे में गया है, फैट कितना आपके पराठे में गया है, वो कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं कि एक आलू पराठा में आपका कितना कैलोरीज है. अदरवाइज वी ऑलवेज से यूज एप्स, दे यूजुअली हैव स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी. ओके डॉक्टर भूमिका, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. मैम आपने ये जो एक्सचेंज बताया था जिसमें नट्स एंड सीड्स है ना, एक ही एक्सचेंज है, तो मैम अगर हम सीड्स भी देना चाहते हैं तो फिर उसमें 2 करने पड़ेंगे ना एक्सचेंज हमें? Just come again, भूमिका. जैसे आपने ये जो एक्सचेंज लिस्ट बताई ना, जो ऊपर बताई थी, उसमें नट्स एंड सीड्स का एक एक्सचेंज दिया है आपने. अगर हम किसी को है ना हम सीड्स भी देना चाहते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज हमें 2 करना पड़ेगा. बढ़ा देने. हाँ. ओके. और मैम मैंने आपसे एक क्वेश्चन डाला था, जैसे किसी पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है तो अब वो है ना मेरे पास एक्चुअली डाइट के लिए आए थे, तो मैम मैं उनको क्या सजेस्ट करूंगी? उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के टाइम पे कुछ भी है ना मीन्स बताया नहीं, केवल डॉक्टर ने ये बोला कि आपको दलिया खिचड़ी ही लेना है. अब वो दलिया खिचड़ी खा खा के पेशेंट बोर हो गया, तो ये आज भी कि हमें क्या लेना चाहिए, तो मैम आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? हम जैसे फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स खिला सकते हैं. See, Dr. Bhumika, I don't know what the patient has been suffering from and why he has been given only दलिया खिचड़ी. First thing is कि डॉक्टर्स कई बार सिर्फ अगले विजिट तक उनको बोलते हैं कि दलिया खिचड़ी खाओ, तो क्या उनकी रिपीट विजिट हुई है? रिपीट विजिट पे उन्होंने क्या उनको पूछा है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? ठीक है, पहली चीज ये जरा एक बार पता कर लीजिए. एंड सेकेंड थिंग इज that I don't know the history, so I am not going to tell. Okay, if he what
diseases that we have discussed in the course, those are the diseases which we are going to discuss. उसके उनके जो अगर उससे related है कुछ तो आप उनको डाइट बना के दे सकते हैं. Just general for surgical, no, I'm not going to do anything with that. Okay, we can't do anything with that. एक्चुअली उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता था, तो उसकी वजह से उनके ना पाइल टिश्यू बढ़ गया था, तो उस वजह से उनकी सर्जरी हुई थी. वो उनका मतलब रहा था सर्जिकल प्रोसीजर. No, Dr. Bhumika, I'm not going to discuss that one because it is a specific case that you're asking. Just go back, tell him, ask him to the doctor that is this soft diet is going to be lifelong. Okay? So they need to ask that question, or you need to talk to the doctor for on his behalf. Okay, thank you. Yes, Anupama ji, please ask me. Anybody who still haven't understood how to convert your meal exchange plan into a menu plan, please let me know. This is what I am going to explain completely today. Yeah. Yes, Dr. Anupama. नहीं, सिर्फ अनुपमा मैम. Okay, Anupama. हाँ, ये मिल्क एक्सचेंज का ही पूछना था मुझे. जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ना मैम, प्रोटीन्स में ही आ रहा है ज्यादातर. तो जैसे अभी मिल्क एक्सचेंज में अगर हम 5 मिल्क एक्सचेंज लेके 500 ml में हम पनीर बनाते हैं 100 ग्राम फॉर एग्जांपल, तो 500 ml मिल्क में हमको 15 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा, राइट. 15 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा, तो 100 ग्राम प्रोटीन हम जो पनीर निकाल रहे हैं उससे, तो उसमें 15 ग्राम प्रोटीन रहेगा क्या? क्योंकि उससे वे तो अलग निकल रहा है ना. ये मेरा एक्चुअली जब भी क्वेश्चन था कि वे प्रोटीन भी अलग निकाल रहा है और 100 ग्राम में फिर हमारा 15 ग्राम प्रोटीन कवर हो रहा है क्या वो? हाँ, तो अनुपमा अब मुझे एक क्वेश्चन बताइए, ठीक है. आपने दूध कौन सा यूज किया है? गाय का दूध यूज किया है कि भैंस का दूध यूज किया है? गाय का. ठीक है. सो अब अगर मैं आपको डिटेल में जाऊं तो मेरा गाय का दूध और भैंस का दूध भी अलग अलग फैट दे रहा है, अलग अलग प्रोटीन दे रहा है. ठीक है. तो उससे अलग अलग टाइप से पनीर निकल रहा है. हाई फैट वाले पनीर अलग निकलता है, स्किम मिल्क से पनीर थोड़ा सा डिफरेंट निकलेगा. Yes, all the values are affected. So what are we going to do? We can't take into account every possible processing. ठीक है. So if you want to still take into account every possible processing, please refer to more detailed nutritive value tables, or please refer to the apps where you have more detail. Another thing is कि आप 100 ml मिल्क को 100 ml पनीर से इक्वेट नहीं करेंगे. तो 100 ml में जितना मिल्क पनीर निकलता है 20 ग्राम 30 ग्राम, that will be taken as one portion of milk. राइट. हाँ, करेक्ट. हाँ, बट वही मैं पूछना चाह रही थी मैम, क्वेश्चन वही था कि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा मैं ना, वही बताना चाह रही हूँ कि डिफरेंस आएगा, हर चीज में डिफरेंस आएगा. और अगर आपको हर चीज का डिफरेंस देखना है, if you want to, it's a great thing. It's a good thing that you want to go into that much particular for your client. So you please go ahead and buy that book where you will get individual values that you can modify. Actually, ma'am, so you have whey protein in that, na? So you just have to take out that how much whey water has come into that. और जो whey water के प्रोटीन की वैल्यू आप चाहे तो घटा सकते हो उसमें से. राइट. उसमें पनीर का वैल्यू अलग होगा, छेना के नाम से होता है वो. उसमें पनीर का वैल्यू आपको अलग मिलेगा. You don't have to worry about how much whey protein is going. चीज और पनीर डिफरेंट है. चीज को ही पनीर बोलते हैं, छेना भी होता है. If you just see at the back, common names are given. For the same material, common names are given. So just look at through the book in the end. Common names are given for the same thing. Many names are used in India. So it is given behind. ओके. ठीक है मैम. और मैम ये क्रूड फाइबर क्या होता है? इसमें क्रूड फाइबर करके दिया है बुक में ही दिया है. तो वो अपना फाइबर जो आपने शुरू वाले चैप्टर्स पढ़े हैं उसके बुक के? यस. नहीं, बुक के नहीं पढ़े. पढ़िए. हाँ, पढ़ते हैं. ओके. ठीक है मैम. कायान, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. मैम यही कि जैसे अगर किसी को 2000 किलो कैलोरीज की डाइट लेनी है, तो एक्सचेंज तो मेरे को बनाने आ गए हैं कि सीरियल 7 दे दिए. अब उसको मैं समझ नहीं आता कि आगे वो कैसे करूं.
7 एक्सचेंजेस को आगे का कैसे करूं? अगर पल्सेस भी देनी है कैसे उसको करूं? मेरे पास 2 पल्सेस और 7 एक्सचेंज ऑफ सीरियल्स है, तो उसको कैसे मैनेज करूं? वो समझ उसमें में नहीं क्या आता। मैनेज करना है? एक बार पोहा दे दीजिए, एक बार दलिया दीजिए, सीरियल आपके मैनेज हो गए, पल्सेस उसमें है नहीं, ठीक है? फिर दाल रोटी दे दीजिए। तो जैसे मैम अब 30 ग्राम मतलब एक एक्सचेंज हो गया पल्स का, तो अब मेरे हाँ पास 2 पोर्शंस पड़े हैं, तो मैं उसको बोल दूं एक बड़ी हाँ कटोरी दाल खा ले, मतलब 30 ग्राम तो बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप उसको चेंज करना चाहते तो आधा पोर्शन सुबह में दे दीजिए, आधा पोर्शन शाम में दे दीजिए। जैसे कई कई जगह दालें सब्जियों के साथ मिक्स होकर बनती है, तो वो ज्यादा हो जाती है क्वांटिटी, तो दाल की अमाउंट कम हो जाती है, तो आप आधा पोर्शन दाल का ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, आधा पोर्शन डिनर में सब्जी के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। सी दिस इज गोइंग टू टेक प्रैक्टिस कायन। आप गलत करिए, पहले गलत तो बनाएंगे, फिर गलत में ही चेंजेस कर करके सही किया जाता है, ठीक है? सो जस्ट ट्राई एंड मेक। आप या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो सेकंड थिंग क्या है, आप पूरा एक मील प्लान बना लीजिए, फिर देखिए कि अच्छा इसमें मेरे कितने एक्सचेंजेस कहाँ कहाँ यूज हो गए हैं, ठीक है? तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा अब इसमें एक ही एक्सचेंज मुझे एडजस्ट करना है, बाकी मेरा मील प्लान रेडी है, तो फिर उसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। तो मैम जैसे मान लो मेरे पास 7 पोर्शन है सीरियल्स के। Courses, lot of sample meal plans have been given. So just go through those sample plans and मैम see. उसमें ना एनर्जी की वैल्यूज थोड़ी ना ऊपर नीचे दी हुई है, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है। मैंने देखे थे बहुत सारे सैंपल डाइट प्लान दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिए ना। अगर आपको 2000 किलो कैलोरीज की डाइट बनानी है और हमने 200 किलो कैलोरीज की दे रखी है, तो आप एनर्जी कहाँ कहाँ से कम कर सकते हैं? थोड़े से कार्ब्स घटा सकते हैं, थोड़े से फैट्स घटा सकते हैं, तो आप उनमें से एनर्जी फाइन ट्यूनिंग अपने आप प्रैक्टिस से ही आएगा काया। आई विल नॉट बी होल्डिंग अ पेंसिल फॉर यू, ठीक है? Yes, So yes. Ma'am, you have to do that. You have to sit with all the sample diet plans and then do how you can do it. Okay? तो मैम जैसे मान लो मेरे पास 7 सीरियल्स के एक्सचेंजेस है, मतलब एक सीरियल का एक्सचेंज मतलब एक रोटी, 30 ग्राम्स मतलब एक रोटी हो गया। अब मैं क्लाइंट को सुबह 2 रोटी दे दूं, दोपहर को 2 रोटी दे दूं, रात को 3 रोटी दे दूं, तो चलेगा? मतलब उसको उसके मतलब वेट लॉस प्रोसेस में वो दिक्कत तो नहीं होगी कि रात को वो तो बेचारे डर जाते हैं, अरे रात को 3 रोटी खा रहे हैं हम, तो उनको ऐसी नहीं तो दिक्कत आप नहीं उनको वैरायटी दो ना, चावल दे दो, बाजरा दे दो, ठीक है? उनको आप वैरायटी दो। ऐसा क्यों करना है कि अपने क्लाइंट को वैरायटी नहीं दे रही? आप वैरायटी दो, कहीं मैम पोहा दे दो, एक्चुअली दे कहीं वांट सूजी दे सिंपल दो। डाइट ना, सिंपल डाइट, सस्टेनेबल, घर पे किसी को पता ही ना चले हम डाइट कर रहे हैं, हम बस दाल रोटी फुल्का खा के पतले हो जाएं, जो लाइफ थ्रू आउट द लाइफ चलती रहे उनकी, जो उनका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मैंने अगर मैनेज थ्रू किया आउट तो। द लाइफ के लिए भी स्मॉल स्मॉल चेंजेस आप उनको करने कहिए, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल उनकी कैसे आप अच्छी करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं वैरायटी ऐड करनी पड़ेगी। यस। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू जी। Tinu, please ask your question. Yeah, good afternoon, ma'am. Ma'am, I just want to ask कि हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स में क्या दे सकते I can't hear you. Hello, ma'am. Is it audible now? Yes, now it's audible. मैम हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स में क्या दे सकते हैं? प्रोटीन सप्लीमेंट्स में आप क्या दे सकते हैं? सप्लीमेंट्स वी आर नॉट डिस्कसिंग। तो मैम सप्लीमेंट्स बहुत टाइप के आते हैं मार्केट में। आइडियली वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स या सोया बेस्ड जो सप्लीमेंट्स होते हैं दे आर गुड, ओके, बिकॉज दे आर हैविंग ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो आप खुद दे सकते हैं। और सप्लीमेंट्स हमेशा कम से स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है कि 15 ग्राम सप्लीमेंट देना चाहिए तो स्टार्ट आप 5 ग्राम से करिए। ओके मैम। मैम एक्चुअली ये प्रोटीन की वेजिटेरियन डाइट्स में ना आती है प्रॉब्लम, इसीलिए मुझे लगा कि हम किसी को रेकमेंड कर भी सकते हैं या नहीं विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन। तो नहीं रेकमेंड कर सकते हैं, प्रोटीन आप रेकमेंड कर सकती हैं, एंड बट ट्राई टू गिव मोर बाय द डाइट, ओके? और पेशेंट को ये आदत नहीं होनी चाहिए कि अरे आज तो मैं दाल बनाई नहीं, दाल खाई नहीं, चल 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर के डाल दिए। ऐसे पेशेंट को डिस्करेज कीजिए कि जब जिस दिन मैं बोलूं उसी दिन खाना है, उसके अलावा मत खाइए। इवन इफ द डाइट इज डेफिशिएंट, डोंट ईट। Otherwise, patient will stop doing this and they will just tell that अच्छा हम supplement खाने के लिए बोल दिया। Okay, so give them options for the supplement कि अच्छा supplement नहीं खाना है तो आपको डाइट में ये चीज बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आप बढ़ा सकते हैं तो well and good,
और नहीं बढ़ा सकते हैं तो then we can think about supplements. Supplement should be your last resort actually. एक्चुअली मैम नाउ-अ-डेज जैसे रेनी सीजन है यहाँ पे मैम सीजनल वो कहते हैं ना ग्रीन लीफी तो अब मिल ही नहीं रही है, खराब ही हो चुकी है, जैसे बहुत कम अवेलेबल है तो इसलिए Pulses and eggs are year-round available. Non-vegetarian food is year-round available. Soy is available. Tofu is available. Tempeh is available. Miso is available. So all these things are available throughout the year. Please try to include that in your diet. दालों के आटे भी आते हैं, बेसन भी पिस करके आता है, तो वो सारी चीजें भी आप ऐड करिए डाइट. ठीक है मैम. यस मैम. थैंक यू मैम. You're welcome. Okay, I hope I have covered everything today's class. We have taken a jumbo class. I don't want anybody to have any confusion with the meal plan. Okay, and please stick to what you have studied, what you have not understand in the diet. I will not be addressing the questions which are out of the course material. जो हमने सीखा ही नहीं है, उसके ऊपर मैं discussion नहीं कर सकती हूँ. जो हमने सीखा है उसमें नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूजन है, उसके ऊपर मैं बात कर सकती हूँ. ठीक है, आई विल नॉट बी टचिंग एनी सर्जिकल केस. आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनी. Shireen, you want to include Complan and Horlicks in the daily diet? Yes, you can include, but it is not an ideal arrangement. Okay. Reshma, can you please raise your hand? It's lost in the messages. Just Reshma, please raise your hand. I'll take your question. Yes, Reshma, please ask your question. Hi, ma'am. How are you? I'm fine. Yeah. This was a quick question. I think you were discussing a little about that. My question was that when somebody is like dieting to lose weight, what happens is, in spite of the diet and the workout, if the person reaches a plateau, how do you break that? I mean, is there any way to shock that person's body by giving another diet, or Reshma, there are two ways to shake the plateau. Either you increase the calorie, okay? Increase the calorie. Okay. Increase the calorie. Suppose if you are at 1500, you increase the calorie to 1800. Okay, so increase the calorie for a few days and then come back to reduction. Okay, the same 1500 diet you will again do. So you will just shake the system in supplying more calories. Another way to do it is to give very low calorie diet, like a detox diet for like 2 days or 3 days max. Okay, so 2-3 days you give a detox diet to shake the plateau if it's really required. Okay. So that time you can shake the plateau and come back to the normal the calories which the person requires, and you're going to that. Okay, never go for a diet which is less than 1000 calories. But then when you're giving, I'm sorry. Now, when you said if we can increase the calorie, so will there not be a weight gain again? So won't it be difficult to bring it back? That is what you want to shake the weight. You want to budge the weight. Okay, sometimes the body will remain at that weight even at a higher calorie. Thermogenesis kar legi body. So that is what you want to check. You want to shake it up so you can so there are two methods to it. और कोई जरूरी नहीं है कि दोनों भी काम करें, because if the body is really stabilized, is maintained homeostasis, then it is very difficult to shake. लेटू शेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तभी उसके मेजर्स इतने ड्रास्टिक होते हैं. ठीक है, कि सडनली आपने 2-3 दिन स्टार्वेशन कर दिया है, सडनली 4-5 दिन आपने हाई कैलोरी डाइट दी. ओके, हाई कैलोरी बट डजंट मीन जंक फूड. हाई कैलोरी डाइट, हेल्दी फूड. Okay. So there is no such thing that you give only fruit diet one day or liquid that is diet your one detox. day. That is your detox. Detox quality. Okay. Thank you so much. Soumya Shri, please ask your question.
Good afternoon, ma'am. Good afternoon. We are, yeah. Initially, while going for the diet plan, we will be first doing the BMI. Then we will go for the BMR calculation, physical activity, ideal body weight we will calculate. Then we will go for the total and TDE. So from the TDE, if any weight loss is required, then we'll go for some calorie reduction, right? Yes. Then, then we have to think about the macronutrient distribution. Correct. In that, in that we will be going for, suppose it is carbo is 50%. The TDE, suppose if I got 1,400, 50% of that we have to calculate. Yes. Okay, so 1 gram of carbohydrate will be 4 kilocalorie, and we'll be dividing it. Suppose if it is 670, we will divide it by 4. 700 calories is coming from carbs. You will divide it by 4 to get the grams of carbohydrates that you need from your diet. Okay, got it. So in that sense, we will have to, in total, we have to take 170 gram of carbohydrate. Yes, that is a total. That is a total one. Yeah. Total for a day. For a day. And protein, if I have taken 20%, it will be around 70 grams, and 70 gram of protein we have to take. So do I need to get this 1,400 as a total energy? How that calculation will be? How in that Excel sheet we'll be getting it totally in that way? I am not understanding, Soumya. You have told me that 1,400 calories diet you are preparing. Okay. Yes. So in that carbs you are taking 50%. Okay, so that is 700 calories divided by 4. That will give me the grams of carbohydrates. Okay. Yes. Yes. Then for protein you have taken 20%. Okay, so that will be again 20% of, okay, that is your 70. 70 divided by 4. Is that correct? No, 270 divided by 4. Yes, 270 divided. So 270 divided by 4. So that is your grams of proteins. Protein. Yeah. And the remaining is fat, that is 30% is coming from fat. But what is 30% of 1,400? That is 0.3 into 1,400. 400 divided by 420. 9. This is 420 calories divided by 9. Okay. It is giving you the grams of fats that you are going to use. Right? Yes. So where are you confused? The amount of carbs, proteins, and fats are going to give you 1,400 kilocalories, of course, for the day. So I'm not understanding where are you confused in this. Okay, so we have to take 170 grams of protein for the day. That is the requirement, right? How is it 170 grams of protein? It is not 170 grams of protein. Carbohydrate will be around 700 divided by 4, around 160. Okay, that's 160. Write it. And proteins is 67 grams. 67 gram, and carbohydrate fat should be around 45 grams. 46.6. Yes, 46. So this is your, so I am not understanding what is the trouble. 160 grams of carbs should come in the diet. 65 grams of protein should come in the diet, and 46 grams of fat should come in the diet of the person for one day.
Okay, okay. That's it, right? Now we don't want to, in the Excel sheet, we don't want to total amount should not, does not want to reach around 1,400. Yes, once we multiply it by 4, we will get that, right? The calculation goes in that way only, no? I'm not understanding. See, till here you have understood, right? After Yes, that, I what have you have to understood. do is, for example, if you're doing the Excel sheet, so your total, when you're putting all the food groups and everything, your total amount down, which when you add up everything, that Yeah. should be coming around 160 grams of carbs, around 67 or 68 grams of protein, and around 46 or 47 grams of fat. That is what you ideally want, right? Okay, okay. Got Okay, it. and in your energy column, you want 1400 or something around 1400, right? That is what you Okay. want. All right. Got it, got it. Thank you. Okay, Reshma, please ask your question. Okay, no. Okay, I hope I have finished everybody's questions. जिन का हो गया है, please हाथ नीचे कर दीजिए so that I know if any other question is remaining. We have taken almost a 2-hour session, and this session is not going to happen again. Okay, so please let me know what are the questions. Kayan, you still have question? Please मैम वन unmute. लास्ट क्वेश्चन यस मैम वन लास्ट क्वेश्चन मैम जैसे आपने अभी बताया कि अगर वेट स्टक हो गया या बॉडी अपने आप को सेट कर लेती है इस वेट के ऊपर तो जैसे किसी का वेट है वो 58 पे स्टक हो गया उसको 56 या 57 ही वेट लॉस करना है तो उसको मैंने जरूरत नहीं है वेट लॉस करने की. You should understand that अगर उनको इंच लॉस मिल रहा है और वेट लॉस नहीं मिल रहा है, so that is also good. If a person's weight is 58 and his ideal weight is like 47, okay, then you have to wonder कि अच्छा 58 पे स्टक हो गया है, उसको हिलाना है. But अगर 1 या 2 किलो ही बचा है आइडियल बॉडी वेट में, then don't go towards extreme measures just to lose 2 kgs because it is probably for that person to have a 58 kg weight. Yeah. नो मैम एक्चुअली उसका तो आइडियल बॉडी वेट 52 या 53 है बट उस वेट पे वो बहुत ज्यादा पतली लगती है तो उसको है कि 57 तक हो जाए तो चलो मैंने इसका प्लेट्यू आ गया 58 पे तो मैंने उसको शेक करने के लिए डिटॉक्स डाइट जैसे अभी आपने बोलनी है फ्रूट वाली वो दी है उसका वेट वापस 57 पे हो जाता है तो उसके थोड़े दिन बाद नेक्स्ट डे जैसे डिटॉक्स डाइट हम एक दिन के लिए देंगे एक दिन के लिए मैंने दे दी उसका वेट 57 आ गया एज सून एज फिर से हम 58 के अकॉर्डिंग या 57 के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस डाइट देती हूँ वो फिर से बढ़ जाता है उस सिनेरियो में अब क्या करें That is a very difficult task. You just have to try. Okay, you can't go much lower in calories because it's not going to be a good thing. क्योंकि जरा सा ही फर्क है. जैसे उसको 57 उसका वेट हो गया डिटॉक्स डाइट हो गई सुबह वेट आ गया 57 डिटॉक्स डाइट के तुरंत बाद अगर आप वेट लेंगे तो फायदा नहीं है ना वो तो कम होगा ही वाटर वेट भी लूज होता है. हाँ वही ना तो फिर 57 के अकॉर्डिंग मैंने बना कैलोरीज दी तो कैलोरीज उसकी ना मतलब कम आती है बीएमआर के अकॉर्डिंग तो मैं बीएमआर अकॉर्डिंग की डाइट देती हूँ उसको तो 1300 या 1400 इतनी की डाइट देती हूँ तो जैसे हेल्दी डाइट दी है पोहा दे दिया ओट्स दे दिया एज सून एज बेचारी ब्रेकफास्ट खाती साथ इसका किलो फिर से वापस गेन हो जाता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते मतलब ऐसे. No, it is a set point theory. The body has set to this thing. So now what you will look for is that you will look for the holistic health criteria. उनके और क्या-क्या troubles. Like उसका फैट लॉस हो रहा है उसके इंच लॉसेस जा रहे हैं बॉडी अच्छी शेप में आ रही है तो आई थिंक that is good. That is good. Because क्या होता है bone density अगर बढ़ती है तो कई बार हमारा weight वही रहता है. That's what I said. Weight is just a number. You should give it due importance but not undue importance. Okay. ठीक है मैम थैंक यू मैम थैंक यू. Welcome. Harinder ji, please ask your question. Good evening, ma'am. Good evening. मैम मैंने ये पूछना है कि जैसे आपने पहले बताया कि अगर प्रोटीन का इंटेक जो है वो पूरा नहीं होता तो उसको सप्लीमेंट दिया जा सकता है
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है कि सप्लीमेंट्स जो है वो लेने अच्छे नहीं है, तो क्या हम उनको लॉन्ग टाइम ले सकते हैं, लाइफ लॉन्ग? ओके। आई एम ऑलवेज सेइंग कि अगर आप कोशिश कीजिए जितना हो सकता है डाइट से ही दीजिए, ठीक है, and don't explode with protein. I am always saying 20% is very high protein. If you're giving 15% protein also, then it is also absolutely fine. Okay. तो आप मतलब इन्फ्लेट मत कीजिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट, वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज कि जितना हो सके डाइट में से लीजिए, क्योंकि डाइट में जब हम प्रोटीन देते हैं तो बॉडी को जितना चाहिए होता है वो उतना लेती है, बाकी डिस्कार्ड कर देती है, ठीक है। लेकिन जो हम प्रोटीन पाउडर्स देंगे वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, तो अगर वो ज्यादा हमारे चले गए तो प्रोटीन के अंदर जाके फैटी बनाने वाला है, one thing. Second thing is good protein supplements are hard to find. There are a lot of adulteration is there, a lot of steroids are there. So yes, lifelong protein supplementation, so I am anyways against it. But the thing is that if it is required by a person, let's say suppose कोई athlete है वो training के लिए लगा हुआ है 2-3 महीने के लिए, उसको जरूरत ज्यादा है because his workload is more, then that time you can suggest a protein supplement that time to improve the muscle recovery, improve the performance. बट अदरवाइज किसी को भी लाइफ लॉन्ग प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं होती। और जो एम्बे न्यूट्रीलाइट वाले जो सप्लीमेंट आजकल बिक रहे हैं कि नहीं आप चलाओ जी, जब ये एज हो जाए तो ये करो, ये दे आर सपोज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट। ओके ओके, सो दे आर नॉट गुड। लेट मी गिव यू जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट गिव यू अ नेम। दिस इज कॉल्ड द प्रोटीन प्रोजेक्ट। ओके, इसको आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे। और एक है द लिवर डॉग, उनको ट्विटर पे आप सर्च कीजिए। उन्होंने अपनी तरफ से अपना पैसा लगाकर 36 इंडियन प्रोटीन ब्रांड्स को उन्होंने लैब में एनालाइज किया है और सबसे अच्छे और सबसे बुरे जो ब्रांड्स हैं उनकी एक लिस्ट क्यूरेट की है। तो आप उसमें देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई उसमें से कुछ खा रहा है जो डेंजरस है, जिसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यूज ज्यादा है, या जिसमें लेड, जिसमें हैवी मेटल का जो है वो ज्यादा है, तो वो चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस यू हैव टू लुक थ्रू बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ लिस्ट हियर, so you have to check this. Okay, ठीक है। एक चीज और है मैम, इससे भी बेटर अगर हम अपने क्लाइंट को ये कहें कि जो सोया के वो होते हैं, मतलब सोया बीन्स जो होती है उसको रोस्ट करके ले लिया जाए, मतलब कि ऐसे जेब में डाले थोड़ी थोड़ी देर बाद लेते जाए, तो वो भी काफी प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है। Harinder ji, see, this is depending on how much the patient is taking. You can provide any kind of recipe to your client. If they are tolerating it well, it's absolutely fine. Otherwise, you can change the recipe as per their tolerance. ठीक है, अगर किसी को बैठकर बहुत ऐसी आदत है कि वो बैठकर उनके मुंह में कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, ठीक है, so then you can give them all these kind of things कि आप भुने चने रखो, भुना हुआ सोया रखो और थोड़ी देर में आप चबाते रहो। If that your patient has a habit of munching, so yes, you can suggest all these things for them to munch on. Okay, but उनका टोटल अमाउंट वो आपको देखना पड़ेगा कि कितना है, तभी हमें प्रोटीन के बारे में थोड़ा आइडिया लगेगा, राइट? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। Thank you very much. I hope everything is clear now. And I hope that you don't have any confusions remaining. Okay, take care. Please do, जिनको समझ में अगर कुछ भी नहीं आया है, go through your course material, go through your videos, go through the interactive videos as well. Okay, so you will understand what all is required. Okay, thank you so much. Have a great day.